Great. Okay. Yeah. So Jai Bhim all, welcome and thank you for joining Thought Podium today. First virtual symposium presented by Ambedkarites International Mission Society, AIMS Canada, in association with Guru Ravidass Society of Calgary and Dr. Ambedkar International Mission, AIMS, Toronto. Right at the outset, I would like to lay down some ground rules for this event today. So please keep your video on and your mic on mute. If you are not the speaker, the host will mute your mic. This is to ensure we have clear audio from the speakers at all times. We have a question and answer session after the two speakers have finished their talk. Please put your question in the chat box. State who the question is for, your name and location. The meeting hosts will ask the questions to the speakers on your behalf. We have approximately 30 minutes for questions. So we will see how many questions we can fit in that time frame. If the number of questions is too large, please be mindful that your question may not get answered, and we apologize for it in advance. This event is being recorded and will be uploaded on social media like YouTube and possibly on Facebook as well. After this, I'll just mention the agenda in brief. After this, we'll have a welcome address by President of AIMS Canada, Mr. Major Mull. And then we would have the introduction for Dr. Panwar, and then followed by Dr. Panwar's talk, followed by the introduction for Dr. Pathania, and then Dr. Pathania's talk. Thereafter, we'll have the question and answer session. And at the end, we would have the vote of thanks. So now I would just like to hand over the reins to Mr. Major Mull, President of AIMS Canada. Good morning, ladies and gentlemen. Jai Bhim. My name is Major Mull, and it is my privilege and pleasure on behalf of AIMS Canada to welcome everyone to our first virtual symposium. Our most sincere gratitude to Guru Ravidass Society of Calgary and Dr. Ambedkar International Mission Toronto for their support in organizing this virtual symposium. We are delighted to have you join us here on Thought Podium from all around the world for a constructive conversation about socio-economic, cultural, and religious issues of Dalits around the world and in India. We are honored to have Dr. Kaushal Panwar from University of Delhi in India and Dr. Gaurav Pathania from Georgetown University, Washington in the USA. The event hosts will provide a more detailed introduction of both of our speakers. For those that are new here, this is a little bit of background about AIMS Canada. In 2004, under the stewardship of Raju Kamble, a group of citizens came together to raise awareness on the issues of caste discrimination and advocate for the positive change in India and worldwide. Specifically, our mission is to secure the basic human rights and dignity of Dalits, untouchables, and tribals of India. From 2005 to 2015, AIMS Canada hosted biennial symposia at the University of Calgary, connecting with world-renowned speakers from across India and United States, that presented their ideas representing institutions like JNU, Columbia University, and Harvard, among others. In 2016, AIMS Canada was invited to participate in the Congress of the Humanities and Social Sciences Conference, energizing class struggle, race, gender, and colonialism, which brings us to today with our first ever virtual symposium. I would again like to thank you all for joining us in this journey. Jai Bhim, over to you, Nikhil. Thank you. Jai Bhim. Thank you, Major Uncle. Kalsi Uncle, please start with the. Or sorry, it's my turn. So moving on to the main event for today, our first speaker is Dr. Kaushal Panwar. It is a privilege for me to introduce Dr. Panwar, even though I think she doesn't need much of an introduction. He is a well-known personality in India and abroad amongst Dalit
and minority communities. She has made frequent TV appearances since 2012, when she appeared in the famous Star Plus TV program Satyameva Jayate. Dr. Panwar has a PhD in Sanskrit from JNU and currently holds a permanent assistant professorship at Motilal Nehru College, University of Delhi in India. She has been teaching Sanskrit for the past 11 years. She is a guide and has been supervising PhD students. Her expertise is in the areas of Dharma Shastra and position of Shudra, particularly Shudra women in ancient history, Varna system, casteism, language of Shudras and women. She has authored 4 books and translated or edited 3. She has published 21 research papers and articles in national and international journals. There are 18 research papers in conference proceedings, translated work, and other publications to her credit. She has been invited as a discussant, commentator, or lecturer in 59 national and international workshops and symposia. She has presented papers in 33 conferences, including at some prestigious institutions like Harvard University in the US and IIM Ahmedabad in India. She also spoke at Indian Consulate in New York. She has also organized 11 national seminars in her department and college. She has also won numerous awards, including Outstanding Woman Award on the occasion of International Women's Day presented by National Commission for Women, Government of India, and Dr. B.R. Ambedkar Mission Award by Bodhisattva Ambedkar Mission Delhi, Award of Honor by Sri Guru Ravidass Global Organization for Equal Rights UK, Recognition Award by AICS Vancouver, Canada. Her story titled Johadi has been included in the MA syllabus of University of Torino in Italy. Dr. Panwar has had an illustrious career and we are proud to have her with us today. So without further ado, I present to you Dr. Kaushal Panwar. Dr. Panwar, please go ahead. Thank you so much for inviting me here as such a great gathering, and topic is nearby my heart. I'm very thankful, and I would like to speak in Hindi. If you allowed me, then it will be easy for me to communicate in Hindi. Yeah, I think, yeah, whatever language of your choosing. Okay. Yeah, just a second. I will mute everyone and just open your mic. Sorry. Okay, you can unmute yourself. Okay, thank you. सबसे पहले मैं अम्बेडकराइट इंटरनेशनल मिशन सोसाइटी कनाडा और गुरु रविदास सोसाइटी ऑफ कैलगरी और अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन टोरंटो आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं चर्चा की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं याद करना चाहूँगी राजू कामले जी को। राजू कामले जी ने, जब मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गई थी 2012 में, राजू कामले ने मुझे फिर अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया, सिचुएशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन धर्मशास्त्र। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था आउट ऑफ इंडिया अपने लोगों से कम्युनिकेट करने का, और उसके बाद की यात्रा जो हुई वो अभी तक जारी है। तो इसलिए मैं आज जैसे ही मैंने नाम पढ़ा अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, जो राजू कामले जी जो पूरा बहुत अच्छा काम कर रहे थे उस वक्त, और बाद के वर्षों में भी उनसे लगातार संपर्क रहा, इंडिया में भी जब वो आए तब भी लगातार संपर्क बना रहा। तो आज मैं उनको याद कर रही थी, और हमारे लिए ट्रिब्यूट उनका यही है कि आप लोग हम सब मिलके उनके इस थॉट प्रोसेस को आगे रखें, आगे हम इसको फर्दर कैसे कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ हो, कैसे हम लोग आपस में बात करें, एक टेबल पर आकर हम लोग डिस्कस करें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अवर मिशन। तो राजू कामले के लिए मेरा यही ट्रिब्यूट है और आदरांजलि है। हम आज जिस विषय पर बोलने के लिए मुझे दिया गया है, अम्बेडकरिज्म एंड क्या प्रभाव है उनका स्वच्छकार समाज के ऊपर, स्वच्छकार समाज वर्सेस वाल्मीकि। मैं आप सबको और तमाम जो सुन रहे हैं हमारी इस चर्चा को एक बात
अपनी बातचीत शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, गला एकदम खराब है। आपने महसूस भी किया होगा कि मेरी आवाज़ में वो दम उस तरीके से नहीं है। उसका रीज़न है, उस रीज़न को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज मेरी बात करने में कुछ चीज़ें लिंक टूट जाएं, क्योंकि मेरा मेंटली सेटअप आज उस तरीके से नहीं है। एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम केवल मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक उस व्यक्ति की है जो सोशल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे दलित और बहुजन समाज के लिए कॉन्शियस है, उस सब की प्रॉब्लम है। तो मैं बेसिकली इसके माध्यम से अम्बेडकराइट जो मेरा विषय भी है आज का, अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद क्या है असली मायने में अम्बेडकरवाद। आप सब लोग जो चर्चा में जुड़े हुए हैं और तमाम जो ऑर्गेनाइजर है वो सब बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं। अम्बेडकरिज्म क्या है उसको भी हम जानते हैं, लेकिन ठोस धरातल पे अम्बेडकरिज्म का कैसा प्रारूप है उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। सेकंड पार्ट मेरी जो टॉक का होगा वो होगा स्वच्छकार समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले मैं इसी के ऊपर आती हूँ कि अम्बेडकरिज्म क्या है, और मैं बात की शुरुआत कर रही हूँ वही गांव देहात का जो कंसेप्ट है बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, आखिर वो क्या है, उसको लेके हम कैसे कॉन्शियस होते हैं। इससे मैं अम्बेडकरिज्म को डिफाइन करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की अवधारणा आज के समय की करंट, और मैं इस प्रोसेस में जीती हूँ कि हर समय के साथ कुछ चीजें डिफाइन करने की जरूरत होती है। डिफाइन का मतलब परिवर्तन करना नहीं होता, परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। और खासकर जब हम ऐसे समाजों में जाते हैं जो जहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल जीरो है, जहाँ कॉन्शियसनेस बिल्कुल जीरो है, जहाँ लोग केवल अपना पेट भरते हैं, वो भी दिहाड़ी मजदूरी करके, उनकी नजरों में अम्बेडकरवाद क्या है, मैं आपको सिर्फ वो इशारा करना चाहती हूँ। किताबों में जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में है वो हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। नो डाउट आज के समय को देखते हुए वो धीरे धीरे उस जमात तक भी पहुंचा है जो अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी अपरिचित थी। क्योंकि हम सब जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था वो एक ऐसी धारा को बहा कर लेके गया था जिसने मूलगामी परिवर्तन किया था। समझौतावादी रुख नहीं, मूलगामी परिवर्तन। उस परिवर्तन की धार से होता हुआ हमारा जो समाज है वो समाज कैसे फिर बाबा साहब अम्बेडकर को देखने लगा, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया। कुछों ने बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति की तरह स्थापित किया, नहीं चाहते कि उसके जो उनका ज्ञान था, जो उनका नॉलेज सिस्टम था, जो उनके काम थे, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत की दिशा को बदल दिया था, लोग उसको ना जान के ये जाने कि ये भगवान है, ये मूर्ति है। मैं बोधिसत्व भगवान की बात नहीं यहाँ कर रही, आम एज ए ले मैन हु स्पीक्स अबाउट भगवान, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो जो कहता है उसकी नजरों में जो है वो चाहता है कि ये स्थापित मूर्तियों मंदिरों में रहे, मूर्तियों की तरह नहीं। दूसरी धारा एक वही, वो चाहता है कि हम नाम तो लें, समाज में उनके नाम के आधार पर बातचीत भी करें, एक जुड़ाव भी महसूस करवाएं, और हमारी जो संस्थाएं हैं उनसे भी एक जुड़ाव महसूस हो, लेकिन वो ज्ञान आधा अधूरा रहे। अपने मोहरे में जितना वो फिट बिठा सकते थे उतना बिठाने भर की कोशिश। और ये मैं केवल मैं नहीं कह रही, तमाम आज के समय में हमारे सामने उदाहरण है। ट्विटर मीडिया भरा हुआ है कि जो जय भीम लिखने से धमकियां दी जाती, जो एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठाक पद पे है, ठीक ठाक पोजीशन है, लोग उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो ये कहता है कि जो ये अम्बेडकर है ये नक्सलवादी अप्रोच है, ये जो पूरी मूवमेंट है ये विद्रोही है, राष्ट्र विरोध का काम कर रही है। ये क्यों कहने की जरूरत आज पड़ी दोबारा से, ये दौर क्यों आ रहा है, इससे अम्बेडकरवाद को परिभाषित करने की जरूरत है। क्योंकि
उससे हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो चुका है और वो प्रभावित होता जा रहा है, क्योंकि उसको जो बाबा साहब अम्बेडकर को टीवी में दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, इवन जो अम्बेडकर के जो राइटिंग्स है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग्स हैं, जो अब दोबारा वॉल्यूम जो निकला, जो उसमें दिखा रहा है, वो हमारा युवा पढ़ रहा है, वो हमारा युवा देख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को वो इसी रूप में जान रहा है। एक छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर बताती हूँ। मेरी महाराष्ट्र से एक जगह बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा सर महाराष्ट्र में तो मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद भी क्या वजह है बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी स्टैचूज आजकल हम देखते हैं, वो पार्लियामेंट की ऐसे उंगली की बजाय वो हमें ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों ये स्लाइटली जो परिवर्तन होता जा रहा है, इससे हम अम्बेडकरवाद को कैसे समझेंगे? आप और हमारी पीढ़ी सदियां तो रहेंगी नहीं। जो चीज आगे जो आप चर्चा कर रहे हैं आज, वही लोग डिजिटल मीडिया से सुनेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो राइटिंग को देखते ही मूल, हमारे यहाँ संस्कृत, मैं तो संस्कृत पढ़ाती हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है मूल टेक्स्ट को पढ़ना, मूल रेफरेंसेस क्या है, उस टेक्स्ट के आधार पर रिसर्च करना। अगर एक तरह से अगर आप मूल टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर की ओरिजिनल राइटिंग थी, उन्होंने किसके बारे में क्या कहा उस वक्त, वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये ज्ञान आधा अधूरा है। जो आपको दिखाया जाएगा, जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको समझाया जाएगा, जो आपको समझाना चाहते हैं, आप वहीं पे पहुंचते हैं। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से फिर दोबारा एग्जाम्पल देके कहूंगी, क्योंकि आई एम रिसर्च स्कॉलर और हम लोग हवा में कम से कम बात नहीं कर सकते। एज बीइंग ए सोशल थिंकर या इंटेलेक्चुअल या सोशल एक्टिविस्ट, हम फैक्ट के आधार पे बात कर रहे हैं। आप किसी कहीं भी चैलेंज कर लीजिए उसको। रेनोवेशन हुआ अभी पूना में, उसमें जो चीजें थी, असली जो कंस्ट्रक्टिव जो चीज थी, वो रेनोवेशन के नाम पे, या यूं कहें कि उसका सौंदर्यकरण, रेनोवेशन नहीं, उसकी सुंदरता बनाने के लिए, सौंदर्यकरण करने के लिए मूल चीजों को धीरे धीरे मॉडिफाइड करते जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो ज्योतिबा फुले का जो कुआं था, वो कुआं वहां था या नहीं था, ये कौन बताएगा? क्योंकि उसमें तो आपने म्यूजियम में परिवर्तन कर दिया। इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो चीजें जो असली, जो बाबा साहब अम्बेडकर को परिभाषित करती हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबसे पहली है। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपना खुद का जीवन, मैं प्रोफेसर तुलसीराम जी हमारे बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए हैं JNU के, मुर्धैया उनका बहुत बड़ा एक ऑटोबायोग्राफी हुआ, बाद में दूसरा पार्ट भी उसका आया। वो कहा करते थे, हमें बताते हैं, हम लोग एक तरह से प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर तुलसीराम, तमाम हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे अपने समाज के जो लोग हैं, उनको हम सुनते रहे हैं। और क्योंकि आई वाज द स्टूडेंट ऑफ JNU, तो हम लोग ज्यादातर संपर्क में, वो ये कहा करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर बनाते हैं, वो 3 थे। एक, ज्योतिबा फुले का आंदोलन उनके सामने था। दूसरा, सामाजिक आंदोलन, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का सामाजिक आंदोलन। दूसरा, बुद्ध का पूरा दर्शन एक तरह से। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो था उनका अपना अनुभव, उन्होंने जीवन में जो जिया, वो सबसे बड़ा उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था, किसी भी चीज को मूलगामी परिवर्तन करने के लिए। अगर हम उस दौर की चीजों को देखें, जो एक तरह से एक सुधारवादी आंदोलन की तरफ बढ़ी, नो डाउट सुधारवादी आंदोलन ने बहुत एक नई चीजें पैदा की हैं, कई चीजें हमारे सामने भी आई, लेकिन वो सुधारवादी था, परिवर्तनकारी नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा परिवर्तनकारी था, हम सब जानते। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ठहर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। स्वच्छकार समाज और वाल्मीकि, आप मुझे टाइम का भी बता दीजिएगा, मुझे कितनी देर बोलना, ठीक है जी? अब मुझे टाइम भी बता दीजिएगा कितनी देर मुझे बोलना है, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर अपने लेक्चर को समाप्त। तो हम अब बात करना चाह रहे हैं स्वच्छकार समाज और वाल्मीकि जाति पर बाबा साहब अम्बेडकर का, अम्बेडकरवाद का क्या प्रभाव है।
जो स्वच्छकार समाज है और जो वाल्मीकि जाति है, मैं पहले इसके ऊपर 2-3 मिनट में बात करना चाहूंगी। वो ये कि स्वच्छकार समाज जो संबोधित है वो तमाम उन समुदायों को संबोधन है जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई जातियां। जो स्वच्छकार समाज जो केवल वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ है वह स्वच्छकार समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप अगर इसको मोटे रूप से देखें तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे दलित जो शब्द प्रयोग किया गया है वो SC/ST की तमाम कम्युनिटी का एक प्रतिनिधित्व करता है, दलित शब्द, जिसमें हमारी ताकत भी दिखाई देती है, जिससे हमारी यूनिटी शब्द सामने आती है, जिसमें हमारी एक इक्वालिटी जो बाबा साहब अम्बेडकर का बेसिक जो वो था कि समानता, समान दिखे सारी जातियां, इसलिए हमने उनको दलित शब्द से संबोधित किया। हम इन जातियों को दलित शब्द से संबोधित करते हैं। ठीक उसी तरह जो स्वच्छकार समाज है वो उन सारी जातियों का ही प्रतिनिधित्व करता है जो जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई जाती है। उसमें वाल्मीकि भी समुदाय है जो तमाम जगहों पर अलग अलग नाम से जाना गया है। नॉर्थ में वाल्मीकि जाति को अलग नाम से जाना गया, पंजाब में अलग तरह से नाम से संबोधित किया गया, यूपी में अलग तरह से किया गया, महाराष्ट्र में अलग तरह से किया गया। और मजेदार बात यह है कि हमारा जो साउथ की जो बेल्ट है वहाँ जो वाल्मीकि समुदाय है वो तो SC में मैं अपने आप को मानता ही नहीं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग है। वहाँ का वाल्मीकि और नॉर्थ इंडिया का वाल्मीकि दोनों अलग अलग है जो एकदम डिफरेंशिएट करते हैं अपने अपने। ओके, मनोज कुमार कमेंट कर रहे हैं कि मैम प्लीज गो विद इंग्लिश सो दैट आई एम एबल टू गेट यू। I will try to sum up some lines. I'm not able to speak the whole lecture in English. I have a problem with English, but I will try to communicate my talk about Swacchhakar Samaj. Swacchhakar Samaj means related to manual squatter families. तो जो साउथ का है बेल्ट वो बिल्कुल वाल्मीकि अलग तरह का है, जो नॉर्थ का बेल्ट है वो बिल्कुल अलग तरह का है। तो ये सारी जातियां अलग अलग तरह की हैं। तो हमें as being a Ambedkarite, we have to understand that thing. Valmiki caste is not only Swacchhakar Samaj, but whole community related to manual sponge, related to Safai Pesha, that is called Swacchhakar Samaj. We have to understand that point also. अब वाल्मीकि का शब्द का जो संबोधन है वो भी बड़ा गड़बड़ है। जो ऑन पेपर हम वाल्मीकि कास्ट कहते हैं वो असल में व्यावहारिकता में वाल्मीकि कहलाते नहीं है। We are see only on paper Valmiki caste. In practice, we are always called by Chuda, Bhangi, Hela, Dhor, Guman, etc. etc. That is the difference between the Valmiki and other manual squatter family. But it is very controversial that Valmiki name is related to Valmiki Rishi, or Valmiki name belong to Valmiki Jati. And we have to understand this deficit also. One belong to, that is the religious aspect of Valmiki, and that is very dangerous to speak. I'm agree with that point. In today's scenario, we are seeing that religious forces is very powerful in our India, in our country. Whether it is belong to Valmiki Rishi, or whether it is belong to Muslim, whether it belong to community, Parsi, Hindu, etc. etc. ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है कि हम बहुत धैर्य से किसी के
कन्वर्सेशन को सुने, वो अब जा चुका है समय। अगर मैं यहाँ अब ये बोल रही हूँ कि वाल्मीकि जाति सफाई पेशे से जुड़ी हुई जाति है, ये भी लाइन बहुत कंट्रोवर्शियल क्रिएट करने वाली है मेरे लिए पर्सनली भी, क्योंकि जो बिल्कुल एकदम धार्मिकता से जुड़ा हुआ मामला है, जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। उनके लिए व्हाट इज अम्बेडकरिज्म, व्हाट इज अम्बेडकर मूवमेंट, that is not relevant today. They always discuss about the Valmiki Rishi, that is the religious aspect. Valmiki is our forefather, belong to Valmiki community, and it is very debatable topic that Valmiki relation, what is the relation between Valmiki Ramayana, or what is the relation between Valmiki community or Manuel Spencer family, etc. etc. सीधी सी बात है, अगर हम वाल्मीकि ऋषि को भी अगर माने तो उनके हाथ में तो लेखनी है, रामायण लिखा है। तो हमारे अपने इस स्वच्छकार समाज ने, वाल्मीकि जातियों ने कितनी रामायण लिखी है, कितना क्या लिखा है, आपको मैं बता दूं, मैं ज्यादा से प्रभाव भी नहीं करती। ठीक है, हम अब बिना बात की एनर्जी वेस्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग अपना अम्बेडकरवाद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हम इसमें उलझना नहीं चाहते। लेकिन बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ तमाम जितनी वाल्मीकि ऋषि की फोटो रखी हुई है, उन सब के नीचे जो वर्डिंग है, आप सब तमाम जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, नो डाउट। उनमें वाल्मीकि ऋषि की फोटो होती है, नीचे जो लिखी होती है वर्डिंग, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो हिंदी की लिखी होती है। ये वाल्मीकि रामायण की संस्कृत की वर्डिंग नहीं है, मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि फोटो वाल्मीकि की है और वाल्मीकियों के मंदिर में है। तमाम स्वच्छकार समाज की जातियों के वाल्मीकियों में जो जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उनमें फोटो वाल्मीकि की है, लेकिन जो नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है इनकी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सारी की सारी, बेटा पापा को देखो, ये सारी की सारी चीजें वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और ये तुलसीदास का रामचरितमानस। तो हमारी एक ऐसी मेंटलिटी है कि हम इतनी सी लाइन को तो बदल नहीं पाए। ठीक है, आपने मान लिया कि वाल्मीकि ऋषि हमारा है, हमारे पूर्वज हैं, क्लोज द डोर, हमारे हैं, हमारे ऋषि, मान लिया, लेकिन कम से कम आप तुलसीदास की लाइन को तो हटाओ फिर वहां से। ये आप वाल्मीकि ऋषि अपना मान रहे हो, लेकिन जो मंदिरों में जो लाइनें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी आपकी अवधी भाषा की लिखी हुई है, संस्कृत की तो नहीं लिखी हुई। जो संस्कृत की नहीं लिखी हुई तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करने के लिए तैयार, या फिर चेंज कर दीजिए सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वाल्मीकि जयंती आप लोग मनाते हैं, लेकिन जो उनकी रामायण है उसको आप नहीं पढ़ना जानते, तो वो संस्कृत में है। मतलब जो वाल्मीकि जयंती मनाता है वो रामायण नहीं पढ़ना जानता है, जो रामायण पढ़ता है, जो पाठ करता है रामायण का, सुंदरकांड करता है, मेले लगाता है, पूरा कहीं कहीं महीनों चलता है, वो रामायण पढ़ता है, वो वाल्मीकि को नहीं पढ़ता। वाल्मीकि ऋषि की जयंती नहीं मनाता, वो सिर्फ रामायण पढ़ता है। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि जो वाल्मीकि की जयंती मना रहा है वो रामायण नहीं पढ़ना जानता, जो रामायण पढ़ना जानता है वो वाल्मीकि की जयंती नहीं मनाता। तो इससे आगे बढ़ के हमारा जो मतलब जो एक तरह से इन पर्सन भी मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, जो एक समय के बाद जो तमाम वाल्मीकि जातियों में आया था, स्वच्छकार समाज में आया था, वो चाहे मताधीन भंगी का मूवमेंट हो, बहुत बड़ा मूवमेंट किया, आज़ाद भारत में तहलका मचाया, चाहे बाम सेफ के जो बिल्कुल एकदम सूत्रधार जिसको कहेंगे हम वो हो, वो इसी कम्युनिटी से थे। और तमाम लोग, इवन जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो काम करने वाले, पंजाब का जो पूरा मूवमेंट था, आदि धर्म आंदोलन के रूप में जो काम कर रहा था उस वक्त, उसमें सारी वाल्मीकि जाति थी जिन्होंने अपना वाल्मीकि धर्म कह के अलग से राइटिंग में लिखा। उन्होंने अपने आप को हिंदू ही नहीं कहा,
लेकिन इसके बावजूद भी क्या वजह रही, वो वजह हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इन सब के बावजूद हम पंजाब का पूरा मूवमेंट है जिन्होंने इनकार किया कि हम लोग हिंदुओं में हमारी गिनती ना की जाए, उन्होंने अलग अपना धर्म लिखवाया। उसके बाद तमाम जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने काम किया, वो सारे वाल्मीकि जाति को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उनका रहा, कंधे से कंधे मिला के काम किया। लेकिन समय के साथ साथ ये वजह क्या हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो स्वच्छकार जातियां हैं, उन दोनों में एक दुराव धीरे धीरे पैदा हुआ। और जब दुराव धीरे धीरे पैदा हुआ, वो दुराव इतना बड़ा कि आज उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल है। वो इसलिए संभालना मुश्किल है क्योंकि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे हम जोर देते हैं, दूसरी तरफ जो हमारी एक वर्ग है जो स्वच्छकार समाज से आता है, वो बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे बात करने के, वो उनको नव बोध कह के एक तरह से गाली देना शुरू किया। और इसको हम एड्रेस कैसे कर पाए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर अम्बेडकराइट पीपल, क्योंकि वो एक ही चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया, लेकिन उससे पहले के जितने भी उनके काम हैं जो बहुत अच्छे से किए गए, उसके ऊपर चर्चा भी करना चाहते। क्यों? क्योंकि वही न केवल उनके बल्कि तमाम जितने लोग हमारे आसपास हैं उनके उसमें फिट बैठता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरा एक आंदोलन हमारे यहाँ रहा, और ये जातियाँ अगर पूरी अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ती हैं तो एक वो जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, जैसे आप भीमा कोरेगांव का उदाहरण ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट था। अगर ये जातियां भी, खासकर स्वच्छकार समाज की जातियां भी अगर अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ती हैं तो एक तरह से एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है सबके सामने। इसलिए हमारे अपने ही लोग, सबसे पहले तो हमारे अपने अम्बेडकरवादी लोगों ने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू की। हम नहीं गए, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं नहीं की। मुझे जब जब वाल्मीकि जयंती में बुलाया गया, मैंने मना कर दिया जाने के, क्योंकि हमारे लिए ये सवाल बड़ा है कि हम बोलेंगे क्या वहां जाके, या आप वहां जाके ये वाली भाषा बोल नहीं सकते, आपकी भाषा वो सुनने के लिए तैयार नहीं, तो आप जाके वहां करेंगे क्या। तो न केवल हमारे अपने अम्बेडकरवादी लोग बल्कि हमारे इसी कम्युनिटी में से आने वाले, जैसे मैं आती हूँ, मैं स्वच्छकार समाज से आती हूँ, आई बिलोंग टू मैनोज कंजर फैमिली, मैं खुद नहीं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो एक गैप बनता गया धीरे धीरे, जिसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। and I am accepting on this channel कि हम लोगों ने खुद ही एक ऐसा स्पेस, ऐसा वो क्यों छोड़ दिया उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए, जो उनको एंटर करने में बहुत आसान तरीके से घुसा। और वो जैसे ही एंटर हुआ तो हमारे बीच में एक ऐसी गहरी खाई बनी कि हम उसको पाट पाने में नाकामयाब रहे। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रभाव, जो अम्बेडकरवाद का प्रभाव जो स्वच्छकार समाज पर जाना चाहिए था, वो उतनी मात्रा में नहीं जा पाया जितनी मात्रा में पहले जा चुका था। मैंने तमाम चर्चा की, हमने कोशिश की, और फिर आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? Yes, yes. Okay. Then तो वो कहीं ना कहीं एक गैप बीच में आया है। उस गैप को भरने में हम लोग कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने में, उस गैप को भरने में एक हमारी अपनी ही सोशल डिस्टेंस हमने वहां क्रिएट किया। उस सोशल डिस्टेंस का फायदा एक जमात को इतना हुआ कि उन्होंने उस स्पेस को भर दिया, और हम, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी थे, हमें इन चीजों के साथ समझौता नहीं करना था, हम पीछे आ गए। और इतने में कि तब हम वहां तक पहुंचे थे, एक गैप बीच में बन चुका था। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टीज या वो संस्थान, वो इंस्टीट्यूशंस
तमाम इंस्टीट्यूशन की बात करी, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तमाम इंस्टीट्यूशन जो चाहते थे कि ये जो एक कौम जो एक तरह से जो अभी बची हुई है वो बिल्कुल पीछे चली जाए, वो उसमें कामयाब हुए। लेकिन इसके साथ साथ मतलब मैं बहुत आशावादी हूँ। मैं ये बिल्कुल आलोचना कर रही हूँ, मैं सिर्फ निराशा नहीं हूँ, निराशावादी नहीं, मैं आलोचना कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि जब तक हम खुद अपनी आलोचना नहीं करेंगे तब तक हम शायद अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। एंड दैट इज माय परसेप्शन, यू मे बी डिफर फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक अपना खुद विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक हम खुद अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम बार बार एक एक्टिविस्ट होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा बार बार इसके ऊपर भी उतना ही जोर रहता है कि हम अपनी खुद की भी एनालाइज करें, वेयर वी आर स्टैंडिंग एट दैट मोमेंट। तो मैं ये करना चाह रही थी, ये वो आलोचना वाला था, वो सिर्फ एक सोशल एनालिसिस, आई एम ट्राइंग टू सोशल एनालिसिस ऑफ दैट कम्युनिटी, not only social analysis, I will try to analyze of the psychology of the Swacchhakar Samaj or Valmiki community. That's why I'm arranging, and that's why I'm critique on that topic. And secondly, I'm very optimistic कि इन सारी चीजों के बावजूद भी स्वच्छकार समाज, वाल्मीकि समाज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित होता जा रहा है। हाँ ठीक है, वो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगा देता है, दूसरी तरफ वाल्मीकि की भी मूर्ति लगा देता है। एंड इन पर्सन आई एम नॉट एग्री विद दैट पॉइंट, बट वी आर अनेबल, अगर हम उन जातियों के बीच में वाकई काम करना चाहते हैं, तो आप जब तक उस थॉट प्रोसेस को उस थॉट प्रोसेस को उस जमात तक नहीं लेकर जाएंगे जो अभी तक छूटा हुआ है, या जिस वैक्यूम को हमने छोड़ दिया था उसको कोई और दूसरा भर चुका है, और हम उसको समझाने में कामयाब ये नहीं रहेंगे कि देखो ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, वाल्मीकि ऋषि भी यही करे, शिक्षित बनो, लिखा ना उन्होंने, हाथ से कलम है ना उनके हाथ में, झाड़ू छोड़ दीजिए, आप कलम उठाइए, ठीक है। अगर आप इसी पॉइंट पे एग्री हैं तो वी आर आल्सो एग्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकरवाद को उन जातियों तक पहुंचाने में हमारी ज्यादा बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब तक हम अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से तय नहीं कर पाएंगे, और इस आरोप को नजरअंदाज करके कि अगर मैं स्वच्छकार समाज की बात करती हूँ तो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग कास्टिज्म, ये भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि एक मिनट में हमारे लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आप तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद को फैला रहे हैं। अम्बेडकरवाद जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, जबकि ऐसा है नहीं, हम भी नहीं बढ़ावा दे रहे, हम सिर्फ एक प्रोसेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ताकि कम से कम ये समाज यहाँ तक तो पहुंचा ना कि वो अपने घर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी लगानी शुरू की, कम से कम उसको दिख तो रहा ना तस्वीर पे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आप गांव देहात में चले जाइए, मैं जिसमें जहाँ की बात कर रही थी, मैं जहाँ से मैंने अपनी बातचीत शुरू की मैं वहीं आती हूँ। गांव देहात में जब आप जाते हैं ना, वहां आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाती है। सीधी सी भाषा में कहूँ, आई बिलोंग टू हरियाणा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, पढ़ रहे होंगे तो घर पे अपने, हमारे यहाँ नहीं चलेगी। अब कम से कम वो समाज आंख में लाके ये कहता है कि हाँ हम अम्बेडकरवादी और जय भीम बोलते हैं, ठीक है, वो वाल्मीकि भी मान रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो साथ ही साथ ये कहने का साहस उनके अंदर आ चुका है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जय भीम बोलने वाले हैं। तो कम, मैंने कहा ना कि मैं तो बहुत आशावादी हूँ, इस मोमेंट को हम यहाँ तक लेकर आ चुके हैं कि हम ये कहें कि हम जय भीम बोलने वाले हैं, अम्बेडकरवादी। पंजाब में एक बहुत अच्छा, एक पिछले दिनों मुझे नारा सुनने में आया था, सॉरी मैम,
Sorry to interrupt you, ma'am. 1 minute warning. Please. Okay. तो आई एम कंक्लूडिंग माय टॉक. मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि वो मुझे नारा भी याद नहीं है, बहुत अच्छा रहा था, लेकिन वो उसने काफी एक तहलका भी मचाया सबके बीच में, लेकिन यूनिटी उसने पैदा कर. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तमाम हमारे लोग आज जो स्वच्छकार समाज के जातियां हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट से ही ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये शिक्षा ले पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लिए बिना वो इवन वाल्मीकि मंदिर की स्थापना तक नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच टू ऑल. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. Thank you for the very insightful talk. Kalsi uncle, you're next. Let me open your mic. I have the great pleasure in introducing Dr. Gaurav Pathania, who is currently serving as a professor in Georgetown University in Washington, D.C. He's a doctorate in sociology. He was also a visiting scholar, University of Massachusetts. You will know his involvement in our society and his concern for our society when I share some of his publications and projects. And I underline some only. I cannot, if I start sharing all of them, then there'll be no time left. Think of the publications: privatization and shrinking free space in Indian higher education. And you can almost relate it to what's going on currently in India for a couple of years. Another publication: University as a site of resistance, identity and student politics. An age-old practice to suppress freedom of expression. Ethnography of caste and class at Indian universities. Middle class resistance and new social movements. The university and the politics of narratives. Interestingly, food politics and counter-assertion in Indian university campuses. Reflection on a Dalit student suicide. I'm thinking of Rohit. People like Dr. Gaurav, and his name in Hindi, Gaurav means pride, is a great asset to our society. It will be an asset from where he comes. It will be an asset where he's going to work now and in future. He is a huge inspiration to all of us. With that, now I invite him to share with you his thoughts on the role of Dalit literature in globalizing Phule-Ambedkarites movement. Thank you. Nikhil, over to you. Dr. Pathania, please go ahead. Thank you, Gulshanji. Thank you, Nikhil. Can you give me the control? Yeah, you should. Sorry, unmute yourself, please. Yeah, sure. You should have the control. Yeah, Okay. You can share your screen. Yeah, we can see it. Okay, good. So, Jai Bhim, and I welcome you all. First of all, let me thank. Am I audible? Yes, you are. Please continue. Okay, good. So first of all, let me thank Major Malji and his team for taking this initiative. And I'm also grateful to Ambedkar International Mission Canada and Shri Guru Ravidass Society Calgary to make this happen. And I'm also very delighted to see virtually Dr. Kaushal Panwar, who is actually from my state and also from my alma mater, JNU. And I think she raised very interesting, very crucial points within the Swacchhakar Samaj. So I am only given half an hour to, and I have a lot to say because I'm writing this currently paper on Dalit literature. I thought to speak on Dalit literature and its impact on Dalit movement. Okay, so I have a lot to say, so I'll quickly run through so that we save our time. Okay, so when you think of Dalit literature,
let me give you a little brief history that how this is not that right now or in this present time or in the 21st century we have literature, but actually who becomes the basis of literature. And of course, everyone know Mahatma Phule, Jyotiba Phule. So what is interesting, actually, some of the aspect which I wanted to highlight, because there are a lot of activists in the meeting, and also many young scholars I can see. Of course, his contribution to education is it's tremendous. It is incomparable. That first opening first school for widows and for girls, and fought against child marriage, and very important that establishing the Satyashodhak Samaj, which is the truth-seeking society in those days when caste system was so rampant. And then, along with several books, he started a weekly with the help of another person called K.P. Bhalekar, his friend. And this paper is actually generally not talked about. Why I'm highlighting it here? Because this is how actually the literature, along with his books, that's where actually he started engaging with, it became a kind of outlet for the Satyashodhak Samaj, whatever thing they were doing, so that it became what do you call uh, the Mukhpatra of Satyashodhak Samaj. And then we should never forget, of course, the contribution of Savitribai Phule, who was the first lady teacher in India, which actually now this is one of the contribution of our movement, that they are trying to establish this and celebrating her birthday as Teachers' Day. This is, I think, would say one of the. So when you read history uh, mm, about Savitribai Phule in these general texts, you will find you will hear the word called the social reformer. But I think the kind of activism she has done, she was a radical social reformer. And if you see this to oppose the Tilak, she put a different the angle that itself, they're all very symbolic, that how that she fought against Brahmanism and Hinduism. One interesting aspect which we generally don't get to hear, that Savitribai Phule was also a very wonderful poet. She wrote a whole volume on poetry in those days, and she also kind of dedicated many poetry to her husband, Jyotiba Phule. So this is, I think, I would say, that is where the real Dalit literature, the emergence of that Dalit literature started. And of course, you know that when Ambedkar got support of Shauji Maharaj and went to Columbia University, where he was able to meet great scholars, and his own supervisor, Professor John Dewey, and then he was in touch with W.B. Du Bois. All these things actually helped him when he went back and starting writing his own literature. So with the hundreds of books and articles and lectures, I think Ambedkar established himself a great scholar, and that everyone, and what, again, here I wanted to highlight that what is important is this journey, that starting not only one paper, but keep moving on to another after another after the other. Bahishkrit Bharat was in 20. So starting with Mook Naik in 1920, then Bahishkrit Bharat in 1927. And there was whole strategy. And that's how actually you launch a movement. Here, there is a whole strategy that when he started Bahishkrit Bharat, at the same time, we was talking about Bahishkrit Hitkarani Sabha, which is the organization towards mass mobilization. So in a way, you will see a pattern, what Ambedkar did, and later on what Kanshiram did, and many other social reformer in our country, many unknown names, which they try to follow the same path by introducing newspapers. And this is now we are living, if you start counting, if someone actually start collecting the amount of literature or newspaper magazines we publish, this is kind of mind-blowing, right? So and when he started Janata in 1930s, then he changed his name in Prabhupada Bharat in 1945. Now,
why newspaper became popular, why he thought that there is a need for newspaper, because Bombay in those days, being an industrial center and a hub of untouchable migrant population, became the nucleus of Dalit activism. And I think the material resources that Ambedkar could provide to a larger Dalit migrant population. So there are some research has been done that how his idea was also to capture this migrant population which was coming from different other small cities, right? And then I am, just because of the time constraint, I'm just jumping quickly, giving an overview that what we see. Then there is of course, then there was a time of in 70s when Black Panther emerged. But I'll come to that later. Before that, I wanted to see that how when it was the emergence of Kanshiram in Punjab or all over, especially in UP, that you see that he followed the similar path by writing books, and the book got translated in many languages. And now here you see his contribution, which is again that starting all the similar kind of trend that Ambedkar followed. So Kanshiram followed the same path, and starting one by, see, imagine first newspaper, first journal he started was in English, and then of course Bomb Safe Bulletin started in 1975. Then Oppressed Indian, one of the most popular newspaper he had. And then Bahujan Nayak, and you see the name also, and you will find a similarity with Ambedkar's, all those initiative he started. Bahujan Ekta in Gujarati in at the same time was inspired by many of these movements. And you have Bahujan Sandesh in Punjabi, and then you have Bahujan Sahitya in Hindi, Shoshit Sahitya in Punjabi. So here you can see these trends after trends, that how one by one many other states, many of that actually, because there are hardly any research on some of these, especially the East Indian states. So we need more research to understand that what happened. And his, of course, the larger goal was to establish the Buddhist Research Center, and that was, I think, it's itself. He started his bulletin also, a Buddhist Research Center initiative. So here you see that the kind of research mind Kanshiram had and how he implemented, that was kind of wonderful thing. And then after that, I wanted to highlight one unknown figure in Indian social science. We've been, so I am into research for past 10 years, and what we know is all these big names in sociology or social sciences. Many times we forget. So I wanted to highlight the contribution of the first Dalit women sociologist of India, who actually very few people know, but she has written wonderful work. She's from Karnataka, and she taught in University of Mysore, had a lot of many departments, and she basically done a lot of ethnographic work on in Karnataka. You have this community called Lingayats. So it's about there, and then and she became herself part of many anti-Brahminical movement, and she wrote about it. So she passed away in 2006. My professor Vivek Kumar, he wrote a obituary for this for Parthavama. I think many of these things are important when we talk about our history, our people. And then in the second, I would say the major contribution, which again is not as popular, we don't hardly know about, Professor Nanduram, who is the first Dalit sociologist at Jawaharlal University. So very few people actually I see when talk about Dalit movement, I hardly see any reference of the Dalit encyclopedia. Imagine in 90s until 2000, he contributed 5 major volumes of Dalit encyclopedia, creating a Dalit encyclopedia. I think that itself is a interesting work. So then I want to start further that when you think of Dalit movement, as Professor Vivek Kumar says, that okay, neither unity nor any movement can be born without being proud of its history and the struggle
of its great reformers. So are we able to tell that history to our next generation, or are we engage ourselves in that generation? So this is one of the, and then while explaining this, Professor Kumar also highlight that there is ideology is an important aspect, and if we don't focus on ideology, we tend to focus on individuals, and individual has a very short lifespan, right? So ideology has a longer goal, like you say, what ideology started by Mahatma Phule, that's what we are still following, right? If there is an amendment on that, but that is what I think. And then I want to go back to the era of 70, where the real thing of Dalit literature started with the writings of people, of young writers who formed Dalit Panthers. And J.B. Pawar is one of the big name, and he was one of the founders of Dalit Panther. So for, I think, 1970, especially 1973-4, was the golden era for Dalit movement after the death of Dr. Ambedkar. And then you had these big names like Raja Dhale, Namdev Dhasal, and J.V. Pawar. I think these people who and their whole goal was to write, and then eventually they moved on to activism. But they kept writing, and you see the similar trend here in the same time 70s, when some of our people who migrated to US or UK, they also were never stopped writing. Like recently, I was interviewing a old Ambedkarite, Velu Annamalaiji from US, and he was writing. I mean, if you Google on YouTube his speeches and his collaboration with Black movement in those days in 80s, 90s, and so many. I said, how did you start writing? He says, whenever there was some Dalit atrocities happening in India, he was writing here in the newspaper, and he got space in major newspaper in the US. I think that was the contribution eventually that it built up to a larger movement. So what these people in Dalit Panther have done, one of the most popular autobiography by Daya Pawar is called Baluta, and I think this particular biography was translated in many languages. And here in this autobiography, what he presented was that how education for him was a very different world, and that world which actually he said nobody else talks about in anywhere else. It's a world of equal rights, he says, and his whole experience in the classroom, and that's why he said. He writes in his book that why he thinks this book had to be written. That is also one of the commentary he has done in his book. So very interesting. I think everyone should read this kind of historic accounts. And then I'm coming to, so there are many, I mean, I'm just giving you one, but there are many, as I mentioned some of the names, there are many people who have from Maharashtra who has written their autobiographies, and they are very popular one and set of the ways. Then I come to the Hindi side, which actually many of these, I personally met these people and they influenced my life as well. And first was Mohandas Mishra, very popular Hindi autobiography, first one, and then after that, most popular one, which was translated in French, German, English, Hindi, even Marathi. So Jhutan and Om Prakash Valmiki, I was lucky to meet him several times. And then this one, Mera Bachpan Mere Kandopar, this was translated in English as well. I have the copy, and I sometimes try to get in touch with Shivraj Singh Bechenji. We try to invite him here also. So I think these things, and if you read, just Google them, and you will find just read their title itself is so interesting. Shivraj Singh write another title called Chamar Ki Chai, or another one is called Bharose Ki Behan. All these are wonderful account of their own personal life and how they. And then another big name I would say is Suraj Pal Chauhan, who is
short story writer and also the poet, and which his many of his poems are very very thought-provoking and direct hits the Brahminical system. So मैं बीच में हिंदी भी बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग मैं तो अभी जो ये अपने समाज में जो ये दलित साहित्य का इमर्जेंस है, इसमें ये सारी किताबें, ये सब जो ये सब अपने समाज के हकों की मांग करती हुई कविताएं, और आप इनकी कविताओं में आप बड़े एक अलग तरह संघर्ष की एक बिल्कुल अजीब अलग तरह का पिक्चर आप देखेंगे। इनमें इनका जो अभिव्यक्ति है बड़ा स्वाभाविक है, उसमें भाषा उस तरीके से नहीं है जैसे हमें बताया गया है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए। सो इसमें बनावटीपन नाम मात्र भी नहीं पाएंगे आप। और ये कविताएं जो है ये सब उनके संघर्षमयी जीवन की पृष्ठभूमि में तैयार होती हैं, जो वो उनकी बैकग्राउंड बताती हैं। और जैसे कबीर की वाणी उसी की तरह बड़ा ही एक फक्कड़ जो व्यक्तित्व है वो उसकी डिमांड करती है, ये इसको पढ़ने के लिए भी वैसा ही व्यक्तित्व चाहिए। और मुझे लगता है ये सब, और फिर जो डॉक्टर कौशल पवार ने बताया, और ये इनसे हम काफ़ी मुलाकात किया डॉक्टर तुलसीराम से JNU में, तो इनका ये दो पॉपुलर बुक, लास्ट वन पब्लिश्ड वाज मणिकर्णिका was published after his death, but this one is very important, very significant work on as an autobiography, and I think that I would also recommend. And when I'm talking about this is just a glimpse because of the time constraint, but the bigger name in Dalit literature, you say Dr. Dharamveer, Bhagwan Das, Sohanpal Nakshar, Sushila Tonkbhore from Rajasthan, D.R. Jatav, Tejpal Singh, Gautam, Roopchand Gautam, and Jayaprakash Kardam, Surajpal Chauhan, of course. So these are many. There's a whole, list of people. Then, so what these autobiographies have done, that they have challenged the existing notions of what religion is, what a life should be, and what literature is. And I think there was this debate when I was growing up in 90s. There was debate in my city as well that क्या दलित साहित्य क्या है, ये वो तो ये अपर कास्ट डिबेट करते थे कि ये साहित्य भी कोई दलित होता है। तो हम उस पे ये उस टाइम का डिबेट है जो कि यही बताता है कि दलित साहित्य जो है वो बड़े ही कितनी तरह की पीड़ा से इमर्ज होता है। वो उसमें एक संघर्ष का एक अलग ही रूप है जो कि आपको अपर कास्ट की उसमें देखने को नहीं मिलता। अभी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में एक प्रोफेसर कांचाइलैया ने भी अपना वो लिखा है autobiography, and I think that is one should also read that, and he writes in English only. That is his one of the goal that he said about language, and I think here you would find it interesting. Also, before I go to that, there is this latest autobiography by Manoranjan Vyapari. This guy, he comes from a Chandal caste, from Chandal community from Bengal, and very powerful narrative. Although his background is more of a Naxalite, but I think I mentioned him here because of that he criticized capitalism at the same time Brahminism. So he worked and he still works as a tea maker, as a rickshaw puller, as a tea dishwasher, or a caretaker at crematorium in Bangla, and won so many Bangla award and many award winner. So जब ये बात करते हैं तो आप सुनिएगा इनका हिंदी में इतना बढ़िया पकड़ लैंग्वेज पे, भाषा पे, और इतने सदा हुआ जो तरीका है। तो ये कहते हैं कि जो जिस बात की जो अभी जो समाज में जो विषमताएं बढ़ती जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो टाई लगाए लोग हैं और अंगूछा पहने लोग हैं, तो इन दोनों के समाजों में जो फर्क है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और ये कम नहीं हो पा रहा। आई थिंक that a whole thing comes from his maybe background of his more next life. So तो तब उसके बाद जब मैं कांचाइलैया की बात कर रहा था, तो कांचाइलैया की ये जो सबसे पावरफुल कोट मुझे हमेशा लगते हैं कि जब भाषा की अब बात करते हैं तो किस तरीके से, और ये तो अभी उनका नया अपना जीवनी आया है जिसको उसमें फ्रॉम ए शेफ
from a shepherd boy to an intellectual. That is his memoir. But this is, I'm quoting from his old book, which was very popular and controversial. That why should I worship the God? तो ये जो मुझे लगता है एक इस तरीके की राइटिंग्स ने एक किस तरीके का एक्टिविज्म पैदा किया, और मेरा जो काम है तेलंगाना मूवमेंट पे, वो आई थिंक इस इनकी राइटिंग ने बहुत बड़ा इंस्पिरेशन किया, जिसमें ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के लगभग 1500 स्टूडेंट्स एक स्टेटहुड के फॉर्मेशन के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। 1500 स्टूडेंट मारे गए लगभग। तो उस दौरान जो है, जब ये इनकी राइटिंग सारी थी, तो इसने एक यूथ पीढ़ी को बहुत इंस्पायर किया, और बहुत सारा जो पूरा मूवमेंट वाज बेसिकली लेड बाय लार्जली बाय दलित SC ST OBCs. So I think that is an interesting point. So what all these biographies, all these autobiographies, and these Dalit writings have done, they provided us a different perspective to look at reality, to look at our own life. And इसको प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं पर्सपेक्टिव फिल्म फ्रॉम बिलो, और अभी रिसेंटली उन्होंने एक ग्रुप भी शुरू किया जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट हैं, न्यू सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, और जिसमें ये नए यंग लोगों को तैयार करेंगे ताकि वो ये पर्सपेक्टिव कैप्चर करें, वो ये अपर कास्ट की लुभावनी भाषाई माया जाल में न उलझ जाएं, तो वो अपना जो है वो बेस कायम रखें। आई थिंक वो दैट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड देन आई थिंक एक बड़ा पहलू जो मैं काम करते इस पेपर पे काम करते जो मुझे समझ आया कि जो बाबा साहब का बड़ा पॉपुलर कोट है, जिसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते अक्सर, कि विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है, विमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, वो हम कहाँ देख पाते हैं। मतलब जैसे मुझे लगता है जो डॉक्टर कौशल पवार बात कर रही थी, इंटरनल डायनामिक्स ऑफ दलित मूवमेंट एंड विद इन ए कम्युनिटी, मैंने लास्ट ईयर भी मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी ये बात उठाया कि भी जब आप दलित मूवमेंट, जब मैं सारी ऑडियंस से बात करते हुए मैंने बोला कि ये आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सब, इसमें से कितने लोग जो है नॉन महार हैं या नॉन चमार हैं, तो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट नील पार्टिसिपेशन ऑफ अदर कम्युनिटी। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है दलित मूवमेंट के लिए, कि हम लोग सिर्फ जो है ये मूवमेंट जो है चमार महार का मूवमेंट होकर रह जाता है, जबकि इस लिहाज से देखें, वी आर नॉट ट्रूली अम्बेडकराइट एंड वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्फ दैट वे, बिकॉज वी नेवर मेड दैट एफर्ट to connect with other communities, to bring other communities, and that is a big question for the Marathis population living in the US or UK or Canada, that why the other community, where are known Mahars, right? So that's why, so in the same context, where are the women in our movement? Where do they exist? Where do they stand? Are we giving them leadership? Abhi, of course, one of the reason is that spread of education among Dalits, of course, opened up all the doors of their consciousness, their intellect. That is true. And also higher education gave us self-confidence. But at the same time, when you compare the male and female scholars among Dalits, you will still find that there's a very less participation of Dalit women in the higher education. लेकिन मुझे ये देख के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ये वुमेन रेजिस्टेंस देखता हूँ ऑटोबायोग्राफीज के थ्रू, आप लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत ही उसका नंबर बहुत कम है। अभी सबसे पावरफुल आपको उर्मिला पवार, वन शुड रीड वेरी पावरफुल नरेटिव ऑफ हर बायोग्राफी। देन यू हैव बेबी काम्बले, and another one is very interesting is which is again not very popular, called Apni Jami Apna Asma. So these are all different regional local language biography, some translated, some are still under work. अब सवाल ये है कि दलित मूवमेंट के लिए ये सवाल है जो कि ये लिटरेचर भी खड़ा करता है। आप इनकी राइटिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अभी सवाल यही है कि स्त्रियों, औरतों को परिवार के घेरे से कैसे बाहर निकाला जाए, उनको इन चूल्हे चौंके से बाहर कैसे निकाला जाए। ये परिवार की जिम्मेदारी पुरुष और औरत दोनों की है, तो ये सिर्फ जो है औरतों पे क्यों ला दी जा रही है।
तो ये बात हमारे आंदोलन को सीखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है दलित महिला आंदोलन, जब तक दलित मेन स्ट्रीम आंदोलन का अटूट हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक ये मूवमेंट जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगा। और भविष्य में जो, अगर हम आत्मनिर्भर, जिसको इंडिपेंडेंट हम दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वो तभी होगा जब हमारी औरतें इंडिपेंडेंट होगी, आत्मनिर्भर होंगी और हायर एजुकेशन में आएंगी, और हम उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और उसका तब आप देखिएगा कि वे अपना साहित्य खुद लिखेंगे, उनके लिए कोई और नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मुझे लगता है जो ये सेक्शन, इस पे काम करने की जरूरत। तो इसके लिए हायर एजुकेशन का स्पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप जब दलित लिटरेचर की बात करते हैं, तो मैं आपको दलित लिटरेचर is not just limited to writing autobiographies or writing poetry or source. It's a very vast area in today's time, where everything becomes a literature now. No doubt that university space that gave birth to end numbers of Ambedkarite organization, like many of you are who are listening, many of you are university product, and I'm sure when you were studying there, you were part of different kind of Ambedkar organization, or you must have formed on your own. So I think university provides that space, that freedom to interact, and also, of course, gives a larger worldview of the movement. अभी रिसेंट में जो क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी स्पेस इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से बाहर आया, बिकॉज देयर की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो किस तरीके से अभी बाहर आए हैं। और आपके पास बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे एक सुसाइड नोट can become part of the literature, right? And that's why you have Rohit Vemula, एक सुसाइड नोट ने पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इरप्ट कर दिया, and that's the best example of that, how people also use these different networks and social media, right? So this also shows that now movement जो हम बात करते हैं अक्सर larger term में, so Dalit movement or any movement is not about protesting and doing this. It is one important thing is nowadays networking, a worldwide networking. That's why now we're all connected. It helps generating resources, it helps providing strength and new strategies. And that is why what the second picture you see of Dalit Lives Matter is a best example that how you look at the Dalit Bojan movement now becoming global. You know, that is, and you have the history from Ambedkar onward. Then when later after the death of Ambedkar, when you have Black Lives Matter here, no, Black Panther, and then Dalit Panther. So this whole connection that one can draw. And now, because of these international network, you have new addition to look at Dalit history. Now Dalit History Month, because there is a Black History Month. So this is all inspiration of young youth who could visit other countries or who are settled here and could interact with the different people. And recently they come up with this new caste survey in the United States, which is, I think, is a very path-breaking time in our movement. And I was also part of this year. If you can see, we presented this historic Congress hearing in the US. I think this is the step forward, that how you finally take your movement to the policy level. And of course, it's a long battle. It has not even started that way. And in UK also, you see people are fighting against to making caste in the as a legal in the legal arena. And many times the bill was not even tabled, but people, our friends, our activists are still working on it, and I'm sure in future this will come up. So why I'm showing is that these things, because that this shows that how when a movement becomes global, then you have these local problems which are also becoming global. With this whole migration of upper caste in the United States or UK, and how, you know, that's why there was a need to bring this kind of survey in the United States, because there are this caste discrimination is happening, right? So then I just quickly jump to that, what is happening in other way, that how we are producing literature now, because we are living in the digital age, digital era. And these things of
all these, I'm just a bunch of names, but you can, if you start searching, there are hundreds, and you can reach to thousands also, the amount of magazines we are publishing in different countries and different cities in India. And what happened is, after the death of Rohit Vemula, there are new initiatives were taken that so people also felt that this should not happen again, and there are many new networks were formed. So this is, I wanted to share that how in there is this website where which provides mental health assistance to Dalit scholars, those who feeling under depression, or because this is a major issue now. We don't realize this, but let me share you data. Many people actually just reject this idea, but from 2009 to 2016, in these 7-8 years, almost 75,000 students in India have committed suicide. You Google it and you will find the detail of it. And this data is the data was presented by the minister in the parliament under Modi government in 2016. So this is another serious issue. But I think many of these groups, like this is another one called Minds of Path, which I'm also part of it, where we are creating a network of scholars who can work on these issues and see actually how these issues can be resolved. But we cannot just completely deny that this is an issue, and it's growing, especially in now in India and now other societies as well. So this is, and then I wanted to highlight that when you talk about this publication, what are these things literate? So Samyak Prakashan is just one way. When you check their website, you will find endless list of that young scholars, young writers who have been publishing on different issues. And I think this is a tremendous contribution of this one publication to bring out new talent in our society. And then on religious ground, when you see that it's just, I'm giving you just one slide, but when you search on UK, you will find almost 25 different gurudwaras we have around UK. So this shows that movement is going around the globe, and these are all people who are Ambedkarite, and many of them who are having religious inclination towards Ravidass or many other small within the movement, where new forms of groupings are emerging. And in US, you know that AIM is one of the initial organizations which was originally started in Japan, but then it was established in US later, and now it works in all these countries which are taking care of many of the Dalit issues and young scholars. And then you have ANA as an association which was formed in US in 2008, and of course the newly formed AIC, American International Center, in 2013. And all these organizations, these are just broader organizations, but then you have many dozens of small organizations which also work, many independent people who are forming a group of organizations. So I think this is all thing is happening. And what these things are doing, like for example, last year, Anna took this initiative to organize first anti-caste conference in the University of Michigan. And then of course, in Columbia, that's a center, and people, or many activists, because of the New York location, many of these caste conference happened in New York. But so our activists, our scholars, our people in the movement are trying to make this connection between higher education and bringing our issues. And Ambedkar is again emerging as a key figure in social sciences. And you have recently a journal started by Brandeis University. My sincere apologies, Dr. Pathania, to interrupt you. 1 minute warning. Oh, okay. So I will quickly run through. So, okay, you know that this is another big initiative by Brandeis University with the help of Professor Thorat, who started this caste journal. And I think this is the first caste journal in the world, which is started, and many people are part of it. And then at the same time, when you think of
this is another way to globalize our movement. All our new talent is emerging. And see here again, social media played an important role. You must have heard this, Sambhaji Bhagat from Maharashtra, Sheetal Sathe, and Sachin Mali. All these people are a big icon, youth icon are emerging. And these are four major directors in Bollywood. In the New York Film Festival last year, they were all participants. I think these are showing that the strength of the Dalit movement, which is coming up. And then in the end, I wanted to highlight to just last point that what is another thing happening is the translations of Dalit writings. That is also it's a kind of big addition in this in the Brahminical resistance. And I think Vasant Moon's autobiography, which was very popular, was translated by Gail Longman and Elliot Professor. So these two pictures you see on the screen, two big American scholars who contributed a lot through their writings in Dalit. So I'm not mentioning their writing, but I think this is their contribution is will always be remembered in that movement. And then last point, that what I wanted to from previous lectures of Professor Kaushal Panwar, that what happens is that in Dalit literature, that we think that language becomes we think language is the goal, but language is just a medium. And I think this is one of the key things which we think of, that it is not just about the language, it's about our idea that we need to bring it out in the masses. And this is one of the contributions of Dalit literature, Dalit literature or Dalit writing, that they broke this Brahminical hegemony of language, right? And now they said, we will speak the language which we like. We will speak the language. So I think it's important. And then with the translation, I wanted to highlight this young guy who started his own publication, first Dalit publication, first English publication. He only writes in English and he only publishes in English. So he's the publisher, the founder of this Panther's Paw, and some of our friends is also supporting his work. So one of his publications is recently come on Savitribai Phule. So, and then there is another young guy who is writing about that, how I think would like to end with this, that we need to have this dialogue between different संस्कृति और भाषा और बोलियों के बीच में. और मुझे लगता है ये एक जब जितना काम ट्रांसलेशन पे होगा उतना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को सीख पाएंगे. Like for example, if you think of Kanchi Ram's life history, he never spoke in English or any other. He was always speaking in Hindi or Punjabi. But now his movement become global or countrywide because his lectures, his books were translated in different languages. So translation is a very big venture nowadays, which can broaden broaden the vision of our movement. And with those words, I thank all of you and love to have more questions on that. Javin. Thank you very much, Dr. Pathania. Thank you for taking a deep dive into the Dalit literature and educating us on various aspects and various books and literature that's out there. We definitely, I'm enlightened. So now we move on to the Q&A section. I would hand over the reins to Dr. Narnavre. He'll be conducting he'll be taking your questions and then asking to our speakers today. Rajda? You'll have to unmute yourself, Rajda. Jai Bhim, everyone. My name is Raj Narnavre. I am based in Edmonton, Alberta, Canada, and one of the executive member of the AIMS Canada. I thank you for both speakers. Very powerful message, very informative, very constructive discussions. However, we only have two questions so far for Dr. Panwar, and I do not see any questions for Dr. Pathania.
And if there are, then the Vijay Khobragade will address to those questions to Dr. Pathania. So two questions for Dr. Panwar. The first one is from Mr. Rahul Chimankar, and his question is, how do educated sections define Ambedkarism? This question for me or another speaker? For you, Dr. Panwar, from Mr. Rahul Chimankar. Okay. Can I read questions one more time for you, please? Hello, Dr. Panwar. Sorry, actually, yeah. Please, can you translate in Hindi so that I can respond correctly? So what he was saying is in Hindi. I want you. You want me to convert? Yeah. Okay. So Mr. Chimankar कह रहे कि जो educated sections है हमारे community के, वो आम्बेडकरिज्म को कैसे define करते हैं? Okay. Okay. Can I respond now? Yes, please. Please go ahead. Actually, हमारा जो education जो sector है, या हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो उनको रिस्पॉन्ड इस रूप में कर सकते हैं कि उनके सामने सबसे पहले तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, whether it is socially, whether it is economically, whether it is related to law and order of manual stranger families, whether it is based on psychology analysis of that community. तो हम लोग बेसिकली इस चीज को पहले एड्रेस करें कि उनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे लगता है ज्ञान आदमी तब लेता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक बिल्कुल एक गांव देहात में बात करते हुए, काम करते हुए, कि जो पहले उसकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो कोरिलेट कर पाए उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को आप देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें जो उनकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बहुत स्टडी करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। अब बियॉन्ड दैट एक सेंसिटिव जो तरीका होता है, वो जो सेंसिटिविटी जो एज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग तो होती ही है, बट वी हैव एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी एज बीइंग ए अम्बेडकराइट। तो हमें उस सेंसिटिविटी के साथ ऐसी कम्युनिटी से आने वाले लोगों के साथ एक संवाद, डायलॉग बनाकर रखने की जरूरत है। और जब हम संवाद की तरफ जाएंगे, then we can raise his or her voice, and secondly we are able to understand their religious aspects also. We can able to understand their social behavior to in practice within schedule caste. हम इसको एबल हो पाएंगे, हम इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि जो जातियों के अंदर भी जो जातिवाद है, मैं सीधे रूप से कह रही हूँ कि जातियों के अंदर का जो जातिवाद जो गहरा होता जा रहा है, उसको हम तभी अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे जब हम इन चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। आई थिंक मेरा ये अपना मानना है, मुझे नहीं लगता कि मैं आधिकारिक रूप से सीधा जवाब दे पाऊंगी। मैं जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्सेशन विद टू ईच अदर। जो सवाल में जो पूछा है, बस इतना ही कहना चाह रही हूँ मैं कि हमारी जो एजुकेशन क्लास है उन तक किसी भी माध्यम से पहुंचे, चाहे उनका जैसे आजकल रिबोर्ड से काम हो रहा है मेन हॉल को साफ करने का, या यूं कहें कि जो पहले जो एक तरह से जो साफ सफाई काम खुद मैनुअली जो काम करते थे वो मशीनें से हो रहा है। अब हम एक एजुकेशन में होने के नाते या एक अम्बेडकराइट होने के नाते हम उनको एक वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज कर दें, उनकी कैसे आप मशीनों का हैंडल करेंगे, टेक्निकली आपको क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, टेक्निकली हम एस्पेक्ट बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं उनको कि आप मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो
पैसे की है उस मशीन को खरीदने के लिए, कैसे आप बैंक से लोन लेंगे, उस लोन का पूरा फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे आप एक अगर मशीन किसी तरीके से सफाई कर्मचारी ले तो कैसे वो 100 लोगों को रोजगार दे सकता है, तो 100 लोग तो कम से कम उस सफाई पेशे के काम से दूर हट जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा काम होना चाहिए। जी, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है बाय मनोज कुमार। ठीक से समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा है कि why some of our people are trying to divert Ambedkar movement। मतलब जो कुछ हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आम्बेडकर जो मूवमेंट है उसको डाइवर्ट करना क्यों चाहते हैं। So I'm not fully understanding the notion of his questions, but he's saying the diverting। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारा जो अम्बेडकरी मूवमेंट है कुछ लोग क्यों इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली जो अम्बेडकरी मूवमेंट पे जो काम करने वाला है, मेरा ये अपना पर्सनल परसेप्शन हो सकती है कि वो डाइवर्ट इतनी हो ही नहीं सकती। अगर वो सच में अम्बेडकरवादी है तो वो नहीं हो सकता डाइवर्ट। अगर होगा तो कोई एक ऐसा कोई खास रीजन जरूर रहा होगा जिसकी वजह से वो अम्बेडकरी मूवमेंट से हट नहीं रहा, लेकिन अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं उठा रहा। इंस्टीट्यूशंस का जो एक इन लार्ज स्केल में सोसाइटी के लिए जो हार्मफुल है पॉलिसीज, उस पॉलिसीज पे बात नहीं कर रहा। तो ये चीजें तो हैं हमारे बीच में। ये हमें मैं इसको मानती हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ लोग हैं जो जब भी कोई ऐसी मूवमेंट खड़ा होने की भी जरूरत होती है, अगर या मूवमेंट खड़ा भी है तब भी हमारे अपने ही कुछ लोग बोलते नहीं, खामोश हो जाते हैं। एक तरह से ये कहिए कि खामोश होना भी कहीं ना कहीं उसके फेवर में ही जाता है। होता है ना कि दो तरह से, जैसे मान लीजिए कोई बोलना शुरू कर देता है तो उसको या तो ये कहेंगे कि आप हमारी भाषा बोलिए, अगर आप हमारी भाषा नहीं बोल सकते तो जो आप बोलते हैं उसको बंद कर दीजिए, सीधा सा है। जब वो बंद करेगा तो जाहिर सी बात है मूवमेंट को धक्का लगना ही है, मूवमेंट तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर बोलना बंद कर देंगे। ठीक उसी तरह जो एकदम बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली हमारे सामने मूवमेंट्स या पॉलिसीज आ जाती है, जैसे पीछे हाल फिलहाल में हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हमारे यहाँ फॉर्म निकले हुए हैं स्टूडेंट्स के, 1.5 लाख से अबव बच्चा हमारा पढ़ता है, 14 से और 1600 के बीच में हमारे यहाँ टीचर्स हैं। ठीक है, उनमें से जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन का परसेंटेज अगर पूरा नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि नील हो। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन जब फार्म की कीमत तय करती है, वो हमारी अपनी ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फार्म की कीमत तय करती है वो इतनी तय करती है लगभग जितनी जनरल कैटेगरी के पास हो। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक डिप्राइव्ड सेक्शन वाला, वो उसका इतना सस्ता है कि वो एससी वाले से भी कम है। अब सोच के देखिए, अब इस मुद्दे पे अगर हम बात ही नहीं करेंगे, सवाल ही खड़ा नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी का तो विरोध आपको करना पड़ेगा ना। फिर जिस इंस्टीट्यूशन की जो इंस्टीट्यूशन किसी चीज को थोपेगा कोई भी चीज, जाहिर सी बात है उस इंस्टीट्यूशन का विरोध तो करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और आगे आके आप काम नहीं करना चाहते, आप उसका विरोध नहीं करना चाहते। इवन यहाँ तक हो जाता है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं दबा देते हैं, लेग पुलिंग करके या डाइवर्ट करके मिशन को कि ये फला व्यक्ति है, ये फला कास्ट से है, फला का है ये। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसमें जाहिर सी बात है अम्बेडकराइट होने के नाते हार्मफुल तो होगा ही जब अपने ही लोग डिच कर जाते हैं। तो जिसके दम पे आप मूवमेंट को चलाना चाहते हैं उसी दम पे अगर जब आपके लिए बीच में खड़ा हो जाता है तब जाहिर सी बात है कि मूवमेंट को धक्का तो लगता ही। जी, थैंक यू डॉक्टर पनवार। ओके, anybody or anyone who have any questions for Dr. Pathania? I think there is one from Professor Gautam.
Okay. Vijay, are you there? Vijay Khobragade? Yes. Okay. Can you address the Professor Gautam's questions to Dr. Pathania, please? Yeah. Jai Bhim, everyone. Thank you for joining this virtual symposium. It's a great conversation by our both speakers. My name is Vijay Khobragade. I'm based in Edmonton, Canada. The questions from Professor Arun Gautam to Dr. Pathania. Question is how to make solidarity on international level for the movement and on what political philosophy? Okay. So thank you, Gautamji. And there are some other question I can see, almost a similar tone. By one is from Rahul Chimurkarji about the ideology. I think I just want to mention this because this is a kind of crisis that not just Dalit movement but every movement going on around us are facing. It's not just because we have a bigger population, we feel like we are more divided, but actually if you study even the upper caste movement, you will see there is also a lot of divide. But what is different between our movement and their movement is that our movement, first of all, it is based on rationality. It is based on reason that Babas have gave us, right? It is we have a logic. There is a space of criticism. There is a space of logic, right? And that is why you see a huge number of groups emerging within us. Like, for example, you take the example of Bomb Safe now, which is doing wonderful work all over India. But when you start thinking of that, how many groups within Bomb Safe are working, right? But I think instead of focusing on that, the criticism of that, we should think it in a positive way, that it's good that many people are getting learning how to be leader, many leadership qualities are building up. So this is, I think we should take it in a very positive light. But one thing I would say, it seems like an ideological crisis in many ways. Like, for example, internal crisis of Bomb Safe, they've always said that, oh, we are ideologically different. But I think this also tells us that our movements gives us that scope to differ with each other, to argue, to counter, to bring new ideas. And I think that should go on. What I find which is very important as a movement scholar, I want to highlight that for a movement to succeed, कि एक मूवमेंट को सफल होने के लिए जो चाहिए, वो चाहिए उसका सांस्कृतिक आंदोलन. वो सांस्कृतिक आंदोलन जब तक नहीं मजबूत होगा, तो हमारी मूवमेंट जो है जल्दी धराशायी हो जाएंगी. और अगर आप देखें कि पिछले 20-30 साल में जो दलित आंदोलन ने जो किया, वो बेसिकली सांस्कृतिक आंदोलन पे ही फोकस किया है. वो उस लेवल पे नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप देखिए तो ये सारा, ये जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया, ये सब उसी कल्चर फॉर्मेशन, एक न्यू कल्चर फॉर्मेशन का पार्ट है. और आप जब नागपुर में दीक्षा भूमि में जाके वो देखते हैं, तो दिस इज अ कल्चरल मूवमेंट दैट यू सी, जिसमें लाखों लोग कहाँ से आके पार्टिसिपेट करते हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है ये सब एस्पेक्ट इसको एक बड़ा होलिस्टिक मूवमेंट भी बनाते हैं. बट हमें ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि अम्बेडकरिज्म इज नॉट ए होमोजीनियस मूवमेंट. ये नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इसके इतने ज्यादा आयाम, इतने ग्रुप्स में और इतनी तरीके से अम्बेडकर को डिफाइन किया गया है. अब ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अम्बेडकर को अवतार मान लिया है, विष्णु का अवतार भी वो लोग बोल देंगे, राइट? वो 36 तरीके के उसमें. तो हमें ये सब चल रहे हैं. अब ये हमारा खासकर नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि अगर और उसका रीजन सिंपल है, आप भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि आवर पीपल आर नॉट एजुकेटेड एनफ.
especially the older generation, to understand. अब जो ये जनरेशन है, इसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सब बच्चे कम से कम प्रॉपर पढ़ पाएं, ताकि इस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, ताकि वो अम्बेडकर को पढ़ पाएं, प्रॉपर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ पाएं. तो ये एक मुझे लगता है रीडिंग एजुकेशन ये साथ साथ चलना चाहिए. तो तब मूवमेंट, और यही मुझे लगता है बाबा साहब का भी संदेश था, और इस पे काम होना चाहिए. धन्यवाद. There's another question from Sumit Bele to you. Annihilation of Caste is a crucial piece of literature by Dr. Ambedkar, where Dr. Ambedkar strongly advocates for intercaste marriages as a tool to annihilate caste, but you still see progressive, well-educated, or global Ambedkarites swearing by this literature, but still resorting to marrying within own caste. How do you see this paradox? Thank you, Sumedh. It's really, no, I was expecting this question from you. And actually, I do mention this in several occasions, that actually, when you think along this line, we have, all of us have actually done this we have done this casteist act in our life. That we, being an educated person, had this option with us, that we could break this caste system by not following the caste line of our marriage, right? But we have not done. So that's why we are not truly Ambedkarite. अभी बाबा साहब ने तो इतना बड़ा संदेश दिया कि he married to a Brahmin in older age. What was that message he wanted to give? His whole life was a message. हम तो अपने ही जो है within Dalits we are not able to marry. अभी आप बताइए, हम सब लोग उसका पार्ट इसके victim हैं, और we never challenge that. अभी जितने लोग बड़े बड़े लीडर और मूवमेंट में पार्टिसिपेशन है, ये सबसे एक यहाँ से ही तो शुरुआत होगी. अभी we are not able to form Dalit as a homogeneous category, and this is one of the reason, क्योंकि हम लोग intermix हो ही नहीं पा रहे किसी भी तरीके से. तो आइडिया कहाँ से? यहाँ तो इतनी, मैं अभी इंटरनल डायनामिक्स देखता हूँ तो लोग एक बुक नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे. अभी recently we were struggling this, that how people don't even accept a book written by any non-Dalits. तो ये क्या है? मतलब see, Ambedkar's life, he was fighting in those days, dealing with thousands of opposition and against the government, against the Congress, and फिर भी वो लोग वो survive किए और optimism रखे. हम लोग अभी इतना वो हो गए हैं कि हम कुछ भी नॉन दलित नहीं करना, और दलित्स को भी डिफाइन नहीं कर. बेसिकली we have to accept that we have many casteist texts we have done in our life, and we should make sure our next generation don't do that mistake, right? And I think, Sumedh, thank you for raising this. This is actually the question of coming from an activist, and this is the part of activism. What हम ये जो किताबें सब जो पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है अगर हम we are end up marrying within our own caste. Because यही सवाल तो मैं upper caste से करता हूँ कि भाई आप लोग जो है जब बात करते हैं, भाई आप सपोर्ट करते हैं, आप कास्ट में बिलीव ही नहीं करते. वेरी गुड दैट यू डोंट बिलीव इन कास्ट, बट देन व्हाई डू यू एंड अप मैरिंग विद इन योर ओन कास्ट? एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट वी नेवर क्वेश्चन. तो अगर ये सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन हो जाए आज, कि भाई हम लोग मान लें कि हमने गलती की है, और आने वाली जनरेशन को बताएं कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रही होगी नहीं रही होगी, पर आने वाले जनरेशन के. सो एंड आई थिंक Sumedh is the best example, and it's an exemplary thing he has done. I think we should follow his path. Thank you, Sumedh. There is some more questions. The one questions from Rajesh Angral from Calgary. How Ambedkarites from North America can contribute in the Dalit movements to strengthen and help our community in India? Is okay. Should I answer this? This is to you, yeah. Okay. So I would repeat this, that one thing is that we have to accept this, and we have to treat every human being as human being. We should not treat them as casteist being. As long as we keep ourselves thinking that we are Ambedkarite, so we have to do this thing. Another thing is that we have to
go back what actually I showed in the presentation, the quote from Professor Vivek, that we have to make this part of our culture to read Ambedkar every day, like we do with religious text, and we have to create this culture of reading in our families, in among our friends, and this is what is missing in this thing. Another thing which is missing in which is actually is all interlinked, because we don't read, we don't value each other, we don't someone actually कोई अगर हमारे समाज से थोड़ा पढ़ लिख के चला जाता तो उस पर लोग वैसे ही नहीं ट्रस्ट करते, कह रहे ये तो इसका तो अब ये तो कुछ और ही बात करेगा। तो ये इतने क्राइसिस हैं, तो एक ट्रस्ट का जो डेफिसिट है वो इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तो इसके और ये सब रिजॉल्व तभी होगा जब हम लोग एक्चुअली में एक बचपन से ये कल्चर तैयार करेंगे बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने का, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने का। अभी मैं देखता हूँ कि अम्बेडकर लिटरेचर में भी आप अगर इसको रिसर्च करें तो लगभग 80% बुक्स जो है दे आर मिस इन्फॉर्म्ड, कि वो कुछ भी छाप देंगे, इधर उधर से लेके वो कुछ भी, उसमें अंबेडकर की ओरिजिनल राइटिंग तो उस पे तो डिस्कस हो, हमारे वो अभी तक हमें वो नहीं अभी हो पाया। तो मुझे लगता है सबके घर में अंबेडकर के सारे वॉल्यूम होने चाहिए और वो डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो ये, और दूसरा what you asked is that one of the thing actually we generally always confuse our movement with the politics, कि भाई इसमें हमारी political party politics और ये सब जो issues हैं, as I mentioned earlier, कि as long as you keep focusing on your cultural movement, then you will realize that the political parties, political benefit will automatically come in place. But we don't, for example, that vision what Kanshiram had, but actually maybe because of the whatever reason he or then Mayavati was in hurry, we missed many of those cultural struggles and cultural heritage that he could develop in the movement. So there is a need to develop more cultural symbols, and that should go with through the education to our next generation. I think this is some of these basic things I wanted to highlight. On top of that, I think we should never worry of that how fragmented the Dalit movement is. We should never worry of how many groups there are. I think this is a great thing for people, those who want to take a lead and work together. And now, as I was showing in some of the slides, that how many even in New York, if you say we have 3-4 gurudwaras, and this is we should look at it in a positive way. Many people, when I do field work, I talk to people, they see how the Dalit movements are divided. And I said, because we are more in numbers. We are 16 and plus, if you include ST, we're 21, and then we are 50% of the population. And of course, what you see is basically there's so many people who wants to be leaders, so many people who have aspirations. I think we should give space to them. And this is a great thing for the movement. We should look it from a positive way. And people who are educated, those who are have time, they should write books. And that is the way to interact with the new generation. Thank you. Questions to Dr. Pathania from Mahesh Wasnik. Mm-hmm. How to create our issues institutionalize encourage our activists, authors, and other mainstream social workers? I think, Maheshji, you are talking about this recent arrest of Professor Phule-Ambedkarite. And there were, I could see when I was following, there were many opposition that, because his affiliation with Naxalite movement and all. But apart from that, I think one thing is that he's a great scholar, no doubt about it. And he has done wonderful work. And I think as a scholar, it is our duty
to protect him as a scholar. But of course, then we can disagree with whatever affiliation he has and whatever, and that, you know, there is a also blame on him that he diverted the movement and all these things. I think this will go on because people will also blame us tomorrow, because as you see that with the kind of groupism that movement is facing and these challenges we have. But I think as a part of Ambedkar's family, as a part of as a scholar, as a great writer, we should always, as a human being, we should stand with him and support him. But despite our all these religious, political, ideological affiliations we have, I think that is that's where we lack in many ways. When you think of the how upper caste function, they are having hundreds of different organizations, but when it comes to a problem, they all come together. We somehow get again diverted, and we keep fighting on these petty issues. I can tell you many issues because I've been researching this. There are so petty issues. People are wasting time. People will write so much on unnecessary. This is not the goal of the, so many times we forget the larger goal. That larger goal is to connect these people and give them Ambedkarite thoughts, but we somehow get into this petty politics, and that is sometimes unavoidable. But I think we as a educated people should take this responsibility and come to the point. So there should be all these internal mechanism we should develop within an organization. We should have some senior people with us who are on board, who take their help if there is any issue crisis. We generally don't do. Like, say, for example, you know, I come from a young generation, and if I have an issue with someone else and I start just making my own venture, that is not the solution. I think senior people like, you know, Professor Arun Gautamji is here, Major Malji is here. I mean, these people have wonderful experience of working in this area, and I think we should take their help to resolve the issues. And there are many issues, and they will keep coming. I think this is the way one should function. We are not doing that. That's what I'm saying. That right now we are not doing, and I can give you many examples that how young generation in many ways fragmenting the movement because they think that we are educated and now we know better. So this whole mentality of that we know better, what does he know? इन्हों की पता है. तो ये सारा जो आइडिया ना, इसको वो मैंने और वो हर कम्युनिटी में मैं देखने को मुझे मिलता है. तो वो उस पे काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि, और ओल्ड जनरेशन को आना चाहिए साथ में. Dr. Panwar, you are there? Yes, sir. This is same questions to you as well. If you can explain, you put your thoughts on from your aspects. Can you repeat again, please? The question is how to create our issues institutionalized, like arrest or activists, authors, and other mainstream social workers. Okay. Actually, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारा जो दलित लिटरेचर्स, जिसको हम बहुजन लिटरेचर भी हम जिस पे काम कर रहे हैं, उसको लगातार ज़्यादा से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग साउंड करने की आवश्यकता है. जब हम इसको ज़्यादा साउंड कर पाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम सारे इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गौरव पठानिया, डॉक्टर गौरव पठानिया जब अपना लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कुछ बुक्स की वो दिया था बीच में, रजनी तिलक का हो या फिर तमाम जितने हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में खासकर सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं, तो वी कैन गो थ्रू द लिटरेचर. तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लिटरेचर है, अम्बेडकरी लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, जिसमें बुद्ध, फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी शामिल होती है, उस वैचारिकी के थ्रू हम इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं. इट्स माय ओपिनियन. Vijay, are you hear me? Are you audible? Vijay? Hearing you, yeah. Yes. Are you getting? You are getting my point? Yes. Yes, madam. Okay. Thank you.
There is a questions from Mr. Kalsi to Dr. Pathania. How can we take broom from Valmiki and give pen back to him and his community? Oh, sorry, to Panwar, Dr. Panwar, sorry. Vijay, if you able to translate, then it will be more easy for me to respond. तो ये क्वेश्चन है कि वाल्मीकि समाज के हाथ से वो जो झाड़ू लेने का and how to, और उनके हाथ में पेन देने का, how we can do that kind of things. Actually जब मैं बोल रही थी, मेरा जो लेक्चर था वो इसी से शुरुआत की थी मैंने कि हम एक तो है हमारे जो सिंबोलिज्म की, जिसको हम राजनीति छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंबोलिज्म तक जाइए, जो एक सिंबल की तरह हम लोग लेते हैं, उस सिंबल में जाहिर सी बात है कि उसके हाथ में कलम है, तो वो कलम हम आइडल के रूप में आगे रख सकते हैं, so that this community able to understand through their forefather. जब उनको ये लगेगा कि हमारा जो फोरफादर है उनके हाथों में कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और मसीहा हैं, हमारे भगवान की तरह हैं, उन्होंने भी शिक्षा पे जोर दिया है। तो ये दोनों चीजें जब हम उनको वहां तक लेके जाएंगे, that will be able to change the structure of our society, खासकर जो वाल्मीकि कम्युनिटी है। एंड अम्बेडकरवाद को जैसे जैसे पढ़ेंगे, अम्बेडकरी लिटरेचर को थ्रू वीडियो, ऑडियो, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, सोशल प्लेटफॉर्म का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो गांव देहात की जो ऑडियंस है वो नहीं पढ़ पाती बहुत बार, लेकिन आज सोशल मीडिया जितना स्ट्रांगली काम कर रहा है, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग्स को थ्रू डॉक्टर अम्बेडकर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मेरा अपना ही यूट्यूब चैनल है, स्वच्छकर समाज की आवाज़, हम उनमें तमाम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो अम्बेडकरिज्म पर बात करते हैं, अम्बेडकरवादी अप्रोच को लेके सोसाइटी में काम कर रहे हैं, खासकर ऐसी सोसाइटी जो एक तरह से जो मुर्दा जलाने का काम करती हैं, डोम जातियां हैं, तमाम ऐसी बास फोड़ जाती। वाल्मीकि नाम तो एक पॉपुलर नाम है, इसलिए हमें सिर्फ ये लगता है कि मैनुअल स्क्वेंजर जो फैमिली है वो वाल्मीकि कम्युनिटी है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था मैनुअल स्क्वेंजर फैमिली इज द ग्रुप ऑफ दैट कम्युनिटी। वाल्मीकि community is only the part of स्वच्छकर समाज। तो इन चीजों को जब हम लेके चलते हैं, I think it's my observation in watch the society scenario, हम लोग इसके माध्यम से परिवर्तन का काम कर सकते हैं। झाड़ू तभी छूटेगी जब उनमें ये चेतना आएगी कि उनका बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, उनका बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, उनका बेटा प्रोफेसर बन सकता है, उनका बेटा विदेश में पढ़ने के लिए जा सकता है, उनका बेटा हाई क्वालिफाइड तमाम चीजें कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो महिलाएं जो साफ सफाई का काम करती है वो तो सुबह उठ के काम पे चली जाती है, तो बच्चे को पीछे से कौन देखेगा? एजुकेशन कैसे लेगा बच्चा? माँ जिसको, जो हमारी दूसरे वर्ग की महिलाएं हैं, वो अपने बच्चे को सुबह टाई वाई में तैयार होके प्रॉपर भेजती हैं, होमवर्क करवाती हैं, उनका लंच पैक करके भेजती हैं, पूरा शाम को भी उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। एक तरफ दूसरी हमारी ये महिलाएं हैं जो सुबह निकलती हैं काम करने के लिए झाड़ू उठा के, और कई तो ऐसे दोनों ही जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ। और हमारी सोसाइटी इतनी तो प्रोग्रेसिव हुई नहीं अभी तक, इंडियन प्रोग्रेसिवनेस कोई ऐसी आई हो कि अगर मान लीजिए फीमेल सफाई कर्मचारी है तो जो मेल जो घर में रह रहा है वो इन चीजों की जिम्मेदारियों को निर्वाह करे। आनंद बाली जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आनंद बाली जी मुझे एग्री करेंगे मेरे साथ कि हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर ऐसे है कि जिसको जो काम दिया गया वही करता है, दूसरा तो काम का हाथ भी नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाएगा, चाहे उसको
उसको कोई घर में काम हो या ना हो, खाली बैठा हो, तब भी उसको यही लगेगा कि जो महिला जो साफ सफाई कर काम करके आई है वही घर का आके काम करे, वही देखे सब कुछ। तो आप ये बताइए हम कैसे मतलब ये अज्यूम करें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कम्युनिटी से झाड़ू को छोड़ के अम्बेडकरवाद की तरफ जाएंगे। बेसिकली इसीलिए मैंने साइकोलॉजी समझने की बात की थी। इनकी जो अपनी समस्याएं हैं, ठोस समस्या है, आप उसको कैसे नजरअंदाज करेंगे? जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे कोई सोल्यूशन, ठोस सोल्यूशन तो कभी आता नहीं ना। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इनके दम पे सत्ता हासिल की, क्या परिवर्तन आया उनकी सिचुएशन में? कोई सिचुएशन में परिवर्तन नहीं आया। खासकर सफाई कर्मचारियों को तो कोई परिवर्तन नहीं आया। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। इवन लगातार उनको मजदूरी नहीं मिली है। बहुत सारे सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो कोरोना के संकट में आज भी उनको पे नहीं मिलती, कई महीने गुजर जाते हैं। पिछले दिनों पूरा हड़ताल की गई कर्मचारियों ने दिल्ली में, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। वो हड़ताल तोड़वा देते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग आंदोलन का मतलब झाड़ू टोकरी से, कि हमारा जो आंदोलन होगा वो झाड़ी टोकरी तक सीमित हो। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो हमारे अम्बेडकरवादी भाई बहन है वो इन चीजों का एड्रेस ही नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं गैप है बीच में। प्रोफेसर अरुण गौतम जी सुन रहे साथ में, मैं उनको देख रही हूँ। सर आपको मैं जय भीम बोलती हूँ। आप सब हैं तमाम जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, सबको मैं जय भीम बोलते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को एड्रेस करें। हम नहीं एड्रेस करेंगे तो दूसरा एड्रेस क्यों करेगा? दूसरे को तो इसी में फायदा है ना, कि ये जो कम्युनिटी है ये झाड़ू तक की राजनीति करे, झाड़ू तक सीमित रहे। इनकी नौकरी की मांग जो हो, रिजर्वेशन की मांग जो 100% हो, वो झाड़ू की नौकरी में हो, ना कि दूसरी नौकरी में। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इस कम्युनिटी से झाड़ू छुड़वा के दूसरे पेश, हमारे यहाँ जो सफारी कर्मचारी संगठन है जिसमें बैजवाड़ा विल्सन जी जिसमें काम करते हैं, उसमें बैजवाड़ा विल्सन जिस उसमें काम करते हैं, उन्होंने फैक्ट दिया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने मैला प्रथा जिनसे छुड़वाई, और जब उन लोगों ने दूसरा काम करना शुरू किया, वो दूध बेचने का काम हुआ। खासकर दूध बेचने वाला मैं एग्जांपल बता सकती हूँ। यहाँ किसी गांव वाले ने उससे दूध नहीं खरीदा। फिर उसके बाद उसको ये लगा कि मैं दूसरे गांव में बेचने के लिए चला जाता हूँ, ताकि दूसरे लोगों को नहीं पता होगा कि ये किस बिरादरी से आता है। तो दूसरे गांव में जाता है वो दूध बेचने के लिए, और जबकि धीरे धीरे वहां तक भी पहुंचा, उसके बाद उसको लौट के वहीं आना पड़ा। क्या करें फिर, कहाँ करें? हालांकि हमारा ये दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए काम कर रहा है लगातार। हम लोग भी इस इशू पे मिलन कामले से मेरी बात हुई है, चैनल पे भी बात की मैंने बल्कि उनसे, कि ये तो ठोस चीज है कि जब तक कोई भी समाज आगे बढ़ा ही नहीं, जब तक उसने अपने उस पेशे को नहीं छोड़ा, ये समाज अभी तक वहीं अटका हुआ है। और इसको वहां से निकालने के लिए साइकोलॉजी ज्यादा तैयार करने की जरूरत है, तब वो सोशली मूवमेंट की तरफ आएगा। इट्स माय ओपिनियन। क्योंकि उनकी जो सामाजिक जो उनकी मानसिकता बन चुकी है, पैदा होता नहीं बच्चा कि झाड़ू लगाने वालों में नाम चलवा देते हैं, नाम चलता रहता है, इतना वो बड़ा होता है। जैसे ही वो बड़ा होता है झाड़ू पकड़ा देता है उसको। और इसी में ही हमारा जो यंग जो सफाई पेशा से जुड़ा हुआ है, आपको पता है, हैरानी होगी आपको सुन के, उनका ये मानना है कि इसमें काम में बुराई क्या है। सुबह जाते हैं 2 घंटे के लिए झाड़ू मार के आ जाते हैं, पूरा दिन खाली, पूरा दिन अपना ऐश करो। तो ये बनी हुई है ना मानसिकता। जब तक ये मेंटलिटी आप चेंज नहीं करेंगे थ्रू अम्बेडकराइट मूवमेंट, थ्रू पर्सनल रिलेशन, इवन आप जब तक इनके साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे तब तक भी एक समस्या है। और साथ ही साथ मेरा ये सुझाव भी है एक तरह से, और मैं इसके ऊपर काम करना मैंने शुरू किया, और पिछले दिनों की डेवलपमेंट मैंने ये देखी कि इस समाज में एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है
अम्बेडकरिज्म की, और वो इस रूप में ज्यादा बढ़ी है कि उनको, उनके सामने जब वो लोग जाना शुरू हुए जो उन्हीं की कम्युनिटी में से आए, झाड़ू पोछे बर्तन करते हुए, साफ सफाई का काम करते हुए आगे ऑफिसर बन के उनके सामने आ रहे हैं दोबारा, और वो खुले दिल से ये स्वीकार कर रहे हैं उनके सामने कि इस पेशे को करते हुए ही हमने कैरियर बनाया है, इसको छोड़ के। वो फिर उसको आइडल के रूप में देखते हैं। तब वो माएँ, वो बहनें, वो हमारी महिलाएं, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की फॉलोवर होने के नाते उन्हीं का ये आदर्श मानती हूँ। मैंने कहा है कि किसी समाज की तरक्की अगर देखनी हो तो उस समाज में रहने वाली महिलाओं की दशा पे देखिए। तो इस समाज का अगर हम उदाहरण दें तो हमारी महिलाएं तो है ही नहीं जागरूक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खाया पिया मौज, झाड़ू मार के आता है सुबह, ठीक है, 5वीं 7वीं 10वीं तक पहुंचता है लड़का, ज्यादा से ज्यादा लड़का लड़की, उसके बाद ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। दिल्ली के स्कूल में आप सर्वे करवा देखिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्रॉप आउट रेट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। यही पीछे मिलता है ज्यादातर, क्योंकि पीछे उनकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं। एमसीडीज के स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं उनकी खुद की मानसिकता ऐसी है कि ये पढ़ के क्या करेंगे। और हमारे टीचर्स भी, हालांकि मैं टीचर पेशे से ही जुड़ी हुई हूँ, तब भी मुझे ये लगता है कि मैं तब भी ये कह रही हूँ अगर, तो उसका बड़ा रीजन है टीचर्स की अपनी मेंटलिटी ये बनी हुई है कि हमें नौकरी तो चाहिए सरकारी, लेकिन स्टूडेंट हमें सरकारी नहीं चाहिए। उनके सामने जो स्टूडेंट आते हैं सबको पता है, प्रोफेसर अरुण गौतम जी मेरी बात से एग्री करेंगे, और तमाम आप लोग जितने भी इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं, कि ये तो मेंटलिटी है कि टीचर्स खुद नहीं पढ़ाना चाहते उनको। प्राइवेट स्कूल की हालत क्यों खराब हुई हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल का मतलब है दूसरा प्राइवेट, पब्लिक स्कूल मतलब हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, और जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, मगर पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट है असल में उसको पब्लिक कहा जाता है। Sorry to interrupt, Dr. Panwar. Please summarize your answers shortly. Okay, I think I have already elaborated and there is no need of summarize. मैं बस लास्ट में ये कह रही हूँ कि ये एक मेंटलिटी है कि वर्ड्स की परिभाषा कैसे बदल जाती है। मतलब हमारे लिए पब्लिक स्कूल हमारे लिए प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल हमारे लिए सरकारी स्कूल है, और ड्रॉप रेट बढ़ता है सिर्फ इस झाड़ू की वजह से। जी, थैंक यू सो मच विजय। Thank you, Dr. Panwar, for sharing reality. By looking at time, I have questions to Gaurav. These two questions I will combine together. One from Rajkumar and other from Andy Swarna. So the question from Rajkumar, how do we need to read and understand the Kanshiram's idea of political power in the present context? That's the one question. And second question from Andy is, in India, what needs to done to have political voice from Dalit in New Delhi? So those are both questions on similar lines. Good, thank you, Andy. Andy is here in Virginia, and Rajkumar is from Saudi Arabia, and Rajkumar is teaching there. So thank you, Rajkumar, for being here. And so I think this question needs a longer answer. I think maybe I'll just would say that one of the major challenges that of the political voice, which generally comes from the Dalit section, is coming from a middle class, and now there is a huge middle class, a very growing number of middle class, and within that you have people, you see those who are in high positions, and when you really try to talk to them, or you meet them or research them, you will find that they are the most Brahminical people of our society, but at the same time they are, when you go and meet them for movement, they also contribute. So it's a kind of very hodgepodge kind of lot, this middle class, which will also tell about, as Dr. Panwar was saying, that
आप उनके घरों में जाइए तो एक तरफ अंबेडकर भी लगे होंगे कहीं कोने में, और उनके गणेश और वो सब चीजें भी चल रही हैं। तो ये सारा बड़ा, तो ये जो है यही है एक्चुअली दलित वॉइस आज के टाइम में, जो इतना मिक्स हो रखा है कि उसको उसको आप कैसे समझे, कैसे मतलब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अभी देखिए दिस इज इजी फॉर फॉर पार्टीज लाइक बीजेपी टू कम इन एंड यू नो use these people. So अभी present middle class is being being misused at the time where they don't have any voice. This is kind of the voice of theirs which they are speaking in terms of. सो जाति जो है, जो अभी भी एक सामाजिक पूंजी है, ये हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो आप डॉक्टर पंवार के लेक्चर समझ लीजिए कि कैसे वो परपेचुएट करती हैं जातियां, और वही काम, वही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। लेकिन अभी हमारे पास जो है करीब जो 20-30 मेजर जो है डिक्की के थ्रू बड़े करोड़पति लोग भी आ गए हैं। तो अभी हमें, मैंने देखा कई बार उनके खिलाफ भी लोग क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट कि वी एवरीवन हैज एस्पिरेशन एंड वी एंड दे आर द वन हु शुड बी द पॉलिटिकल वॉइस, बिकॉज एटलीस्ट दे हैव but again उनमें भी how many of them are having real education, do they have a larger goal, do have a futuristic goal, or is it just a money oriented firm, or money, or the kind of monetary benefits of a community? No, it should be there should be a proper plan that where community could be represented, और ये प्लान है जैसे जो डॉक्टर पंवार ने हाईलाइट किया। मुझे लगता है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे दलित मूवमेंट की, कि ये जो तबका जो अभी तक अपना काम नहीं छोड़ पाया, तो उसको कैसे छुड़ाएं। अभी हम लोग क्या, जैसे मैंने पहले बोला कि महारों पे लगे हुए हैं, चमारों पे लगे हुए हैं, तो उससे आगे हम सोच ही नहीं पा रहे। तो ये भी एक तरह का एक स्वार्थीपन नहीं है क्या? ये एक इंडिविजुअलिज्म ये भी तो है कि आप अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मुझे लगता है जब वो होगा तो पॉलिटिकल वॉइस अपने आप आएगा। अभी वो पॉलिटिकल वॉइस तो आ ही नहीं रहा। आप ये देखिए कि स्टडी का देखिए कि कांशीराम का, व्हाट राजकुमार इज आस्किंग, सो कांशीराम का मूवमेंट फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हिज गोल ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दीज, जिसको कहते हैं ना कि 36 बिरादरी इकट्ठा लाना, वो लेके आए थे एक बार, उनका ये गोल था और उन्होंने किया भी। लेकिन because we did not have a substantial base through a cultural movement or through education, ये सारी कम्युनिटियां फिर जो है वो दूसरी तरफ चलेगी, because it's easy to mobilize them by the other party. तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से हमें हट के जो है इन कम्युनिटीज को डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, और ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम जब ये हेल्प करते हैं तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वी शुड मेक श्योर दैट पीपल who are below us or who are not having the amount of proper amount of resources, we should help them. So ये, because the reservation is not going to solve anything, you know that it's there is hardly any reservation left now, 95% is the now private sector, तो 5% में हम लोग कितना फाइट करेंगे, क्या होगा? सो आई थिंक ये जो हमने जो इतने 50 सालों में जो रिसोर्स तैयार किए हैं, चाहे वो जो भी ज्यादा जिन जातियों को ज्यादा बेनिफिट हुआ, आई थिंक दिस इज, इफ दे आर ट्रूली अम्बेडकराइट, दे शुड मेक ए स्ट्रेटजी कि अभी दूसरी महारों को नॉन महारों पे काम करना चाहिए, उन लोगों को यहाँ लाना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने ग्रुप चल रहे हैं वो सब वही है, वो पूरा महाराष्ट्र में महार आ रहे हैं। तो ये कैसे, हाउ वुड यू एनविजन? तो इसमें हम लोग कहाँ क्वेश्चन कर पाते हैं? तो ये सारे मूवमेंट के फेलियर हैं कि दलित कैन नॉट बिकम ए होमोजीनियस कैटेगरी, एंड ये एक बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे होमोजीनियस एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक जहाँ, तो ऐसे तो नहीं होगा सिर्फ बातों से कि हम कहते रहें कि हाँ भाई हम लोग जो है महार के अलावा जो और जातियां हैं तो मांगों की भी बात तो करते रहें, वाल्मीकि की बात तो करते हैं, लेकिन उनके लिए करें कुछ ना, राइट? तो ये इसका जब तक नहीं होगा तो पॉलिटिकल वॉइस बनेगी नहीं। वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल वॉइस, क्योंकि जब हम इधर से उठाते हैं, देयर इज, बिकॉज द मिनट यू ब्रिंग द पॉलिटिकल एलिमेंट इनटू दैट, देन देयर इज अ कास्ट एट प्ले। हम इधर से कोई आवाज उठाएं, पॉलिटिशियंस को पता है, बीजेपी कांग्रेस को, कि अब दूसरी जाति को खड़ा करके कैसे ये आवाज खत्म करनी है। तो ये सब हम इसमें इतना ज्यादा उलझे, क्योंकि ये एक लार्जर गोल आई थिंक वी शुड
टेक के इन सब कम्युनिटीज को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक बड़ा एक पावरफुल वॉइस क्रिएट किया जाए, और उसके लिए हमें प्रयास करना, जैसे ग्लोबल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं अभी नाउ। मेजर मलजी एंड वी वर टुगेदर इन जापान वेयर अदर पीपल वर आल्सो। तो हम लोग वहाँ बुराकू कम्युनिटी के को भी हमने साथ में जोड़ा। तो हम लोग ग्लोबल अलायंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल अलायंस हमारे हो नहीं पा रहे, वहां पे गैप है, राइट। तो जो सवाल सुमेत ने उठाया, मुझे लगता है वो एक इम्पोर्टेंट है, जो कि करने वाला काम है। और एक ये जो डॉक्टर पंवार बोल रही हैं, तो ये सब जो है, देयर शुड बी सम एक्शन। तो वो सिर्फ आइडियोलॉजी से काम नहीं चलने वाला, राइट। Thank you. I think time is almost now 2 hours. Yeah, 3. Yeah. Thank you, Dr. Pathania and Dr. Panwar, for sharing your thoughts. And I think the purpose of these lectures is, we absorb all the information that is given to us, and then we implement it. So like you said, I think both of you gave us some pointers, some action items. So I have noted mine down, and I'm pretty sure other people have done the same thing. So looking at the clock, I'll just hand it over to Professor Gautam for final words. Professor Gautam, please unmute yourself. शुरू करूं दोबारा? Yeah, we can hear you. Please go ahead. Okay. Again, I am repeating. Thanks, dear Ambedkarites, Bahujan Mool Nivasis, human rights defenders. Jai Bhim, Jai Birsa, Jai Phule, Jai Fatima, Jai Mool Nivasi. I am Arun Gautam from Ambedkar International Mission, Toronto. On behalf of Virtual Symposium on Zoom, Thought Podium organizers, thank to all of you on this event. Holding this event shows the deep commitment of the Ambedkar International Mission Society, AIMS, Calgary, in association with Guru Ravidass Society, Calgary, and Dr. Ambedkar International Mission, Toronto, to spread the mission of Dr. Babasaheb Ambedkar. I would like to thank to Dr. Mrs. Kaushal Panwar, Assistant Professor in Motilal Nehru sorry, University of Delhi, for delivering her lecture on Ambedkarism and its impact on Swacchhakar Samaj. I would also like to thank to Dr. Gaurav Pathania for delivering his lecture on role of Dalit literature in globalizing Phule-Ambedkarite movement. He is an adjunct professor in the Department of Sociology, Georgetown University, Washington, D.C. It would not have been possible for holding this event without the efforts of Mr. Majormal, Gulshan Kalsi, Raj Narnware, Nikhil Kos, Vijay Khobragade, Pankaj Patil, Vishwanath Meshram, and others. India and Canada are both multicultural, multi-religious, multi-ethnic countries. The Constitution of India is compatible with the Constitution of Canada. Atrocities perpetuated on Dalits form an important part of the major man and woman and children of all religions in all countries across the world are violated. This aspect makes the violation of human rights as an important international issue. The human rights are important. Professor Gautam, we lost your voice. Ambedkar gave regard to the reasoning and scientific methodology. The life of Baba Sahib is an example of values like self-discipline, survival in absence of material resources, simplicity, handling conflicts without violence, exploring simple but revolutionary ideas as a mark of superior conduct and living. His ideology contains two important views. One,
rights are protected not by law, but by the social and moral conscience of the society. And two, a democratic form of government presupposes a democratic form of society. Dr. Ambedkar has been narrowly seen as a champion of Dalit rights, but his quest for justice was rather comprehensive. Since Dr. Ambedkar was a great scholar and his writings have inspired people both inside and outside of India, the AIMS Calgary, holding this symposium on Dr. Ambedkar biennially, and now is holding this event in association with Shri Guru Ravidass Sabha, Calgary, and the Ambedkar International Mission, Toronto. This will be an appropriate tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar, which will also inspire the Dalit Bahujans and other Indian diaspora on the areas that he dedicated his life to. I again thank you all very much attending this event. I apologize if I have forgotten the names of some cooperators. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Kannada. Thank you, Professor Gautam. Thank you for the vote of thanks. And I think just a reminder to everyone, this event has been recorded and it will be posted on the AIMS Canada YouTube channel. So here I would officially conclude the event for today. Thank you everyone for joining. Jai Bhim. Everyone, Jai Bhim. Jai Bhim. Thank you, Nikhil. Thank you. Thank you. Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim, everyone. Jai Bhim. Thank you. So much. Thank you, Gaurav Pathania. Thank you, Dr. Gaurav Pathania, for wonderful answers, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Jai Bhim. Bye, Major Ji. Bye. Bye, Gaurav. Bye, Dr. everyone. Ji. We'll talk to you again soon. Yeah, sure. Bye. Okay. We'll have many more symposiums. Thanks for participating. Thank you all. Okay, Nikhil. Bye. Huh? Jai. Bye. Bye.